Hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome back to my channel Engineers Coding Hub. Okay, in this video I will explain you the complete SQL concepts and queries for interview. Okay, so पूरे अपन SQL concepts को समझेंगे and this is the complete video, one shot video होने वाली है जिसमें अपन पूरे SQL के concepts को समझेंगे and सभी queries को भी अपन करेंगे related to that particular topic. Okay, so these are the topics these are the topics which are most important for interview purpose. ओके तो सबसे पहले अपन समझेंगे एसक्यूएल के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं लाइक कंडीशनल प्रॉब्लम्स एंड इसको समझेंगे होता क्या है देन इसकी कुछ क्वेरीज जो इंटरव्यू में बहुत पॉपुलर है वो जो पूछी जाती हैं उसको अपन समझेंगे आफ्टर दैट वी विल आई विल एक्सप्लेन यू एग्रीगेट फंक्शंस सॉर्टिंग सेकंड हाईएस्ट एंड nth हाईएस्ट सैलरी विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली क्वेरी इंटरव्यू में ओके मोस्टली एसक्यूएल इंटरव्यूज ओके ग्रुप बाय एंड हैंडल नल वैल्यू कैसे हैंडल करते हैं एसक्यूएल के अंदर आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग स्क्रैच ओके सो अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे इंटरव्यू की इंपोर्टेंट क्वेरीज भी समझेंगे और ओके एंड आफ्टर दैट पैटर्न मैचिंग रेगुलर एक्सप्रेशन ओके विंडोज फंक्शन लाइक रो नंबर एट ऑल ओके यूनियन ऑल में डिफरेंस क्या होता है इसको कैसे इसकी क्वेरीज क्या होती हैं ओके इनपुट इंपोर्टेंट क्वेरीज कौन कौन सी हैं joins like left join, right join, full outer join, and inner join. And at the end, we will see the asset property. This is the most important interview question. Okay. So these all topics I will cover in this video and I will explain one by one. Okay. सबको अपन one by one समझेंगे. And after watching this video, you will be master in SQL. Okay. You are able to give the all the answers regarding SQL interview. Okay. So कोई भी क्वेश्चन हो SQL का आप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप उसके आंसर्स इजीली दे पाओगे ओके सो दिस इज द कंप्लीट वीडियो अबाउट द एसक्यूएल कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेरीज ओके सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ओके सो लेट्स स्टार्ट Let's start with very basic problems. So there is a I have divided this into a groups. Like the first topic is conditional problem. This is very basic problems, and this is sometimes this is directly asked by the interview. Like find the records where employee salary is 15 more than 15,000, less than 15,000, where name is this, and like this. So first solve this query. So there is a query: how to find employees earning more than 50,000. So I need to find the employees where salary is more than 50,000. So what is the query for that? So let's go to the MySQL workbench and solve this problem. So this is my table. So there is a ID, name, salary, and department. There is a 4 columns in this table. So I need to find the employee record where salary is more than 20,000. So what I need to do, just add the bare condition. This is like this. So just add the bare condition and where the salary is more than 20,000. So just add like this, and this is the operator. This is greater than operator, and using this operator we can solve this problem where salary is more than 20,000. Let's execute it, and we can see the result. There is only come 2 records where salary is greater than 20,000. Here is a Amit and Syam. This has salary is a 30,000. So let's see the second problem. So the second problem is to write the SQL query with a specific name. So how to find the employees where name with Aman. So what we need to do, just change the bare condition. How can I do that? Come here, and this is just I am showing my table. This is my table where I need to show the record only where name is Aman. So what I need to do, add where clause and name is equal to, and make sure whenever you compare the string and the string right inside the single quotes. So and now execute it, and you can see the result. There is a record where name is Aman. So this is very basic queries which is directly asked by the interviewer. I have also faced so many interviewers and I have learned so many things about my interviewers. So
there is a very basic problems to solve this, and you can solve so many problems like this, like where salary is less than 30,000, where name is Ram and something else. So this is very conditional problems. So let's discuss about the aggregate functions. So what is aggregate functions in SQL? So aggregate functions are SQL functions that perform calculations on the multiple row of data and return a single summarized data. ये multiple rows पे ऑपरेशन परफॉर्म करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, and this is aggregate functions. So this is a definition of aggregate functions, and these are the aggregate functions, which is sum, max, min, average, and count. So let's discuss one by one. So first we will discuss about the sum. So sum, what is the purpose of this aggregate function? So calculations the total sum of numeric column. Like if we have a numeric column in our table, so if we want to calculate the sum of every single cell in that column, so we can use the sum aggregate function. So this is a purpose of sum aggregate function. And after that we can use, this is a syntax, like we use the sum and a column name. So it's sum all the cells of that column and return the value. So this is note, this is most important. It is only applicable on the numeric data type. Like if we have a number data type, it's only applicable on the number data type. Like if we have a string data type, it cannot be applicable of string data type, because string पे आप sum perform नहीं कर सकते. That is the reason. And next is the max. So max is, what is the purpose of max aggregate function? So find the maximum value in the column. So as the name indicate, it's find the maximum value of the column. So what is the syntax of this maximum and column name? So we can add the column name, so it will return the maximum value of any particular column. And this is the note. So can be used with numeric, date and string data type. It can be applicable these data types. Like आपके पास अगर numeric data है, then you can perform the maximum. Date के base पे भी आप कर सकते हो, maximum value find कर सकते हो, maximum date find कर सकते हो, and also it's also applicable in a string data type. Okay, so let's discuss. We will see the example of we will do the also example in this video, so don't worry about it. So next is min. So is the name indicate, the find the minimum value of any particular column. So this is a syntax, min and column name. It can be used with numeric, date and string. It's simple. So it can be applicable numeric, date and string. So if you want to find the minimum value of any particular column, you can find. Next is average. So what is the purpose of average? To calculate the average value of the numeric column. Like if we have any numeric column, and if we want to find the average value, like if we want to find the average salary of every employee in the company, so what we need to do, just find the average of every every employee. So you can give the column name, so it will find the average of column. So it is only applicable, again it is only applicable in a numeric value, because आप date पे और string पे ये चीज perform नहीं कर सकते. So the last one is count. So count is the number of row or non null value in the column. This is important. Is non null value count करता है. It will not count the null value. So ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि ये null value count करता है और नहीं करता है. So it will not count the no null value. So what is the syntax? So you can just mention the column name, or you can mention the whole table. Just indicate the star. So this is the syntax of count. So what is the note? The count star count all row, and the count column name counts the non null values in a specific column. Like किसी अगर आप mention किसी specific column को करते हैं, तो it will count only non null values of that column.
एंड अगर आप मेंशन करते हो पूरी टेबल, देन इट विल काउंट द होल टेबल डेटा. So okay, now the time is to see the example and for practical. So this is the example table. This example table, this table name is employees, and there is a column id, name, salary and department. So we need to discuss these questions because this is directly asked by the interviewer. So make sure कि आपसे ये क्वेश्चन बनने चाहिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं. So what is SQL query to find the average salary? So अपन को SQL query लिखना है to find the average salary. So this is the salary. This is our table. So let's write the query. So what is the query of this? So select. Let's change the color. Okay, change. Okay. So select. So we need to find the average salary. So what is the syntax of average? Just see here. This is the syntax. So we just write the abj. This is a function in SQL. So we just write the abj and mention the column name. So I want the salary, average salary. This is important. This is integer. ये integer ही होना चाहिए. ये string और date पे perform नहीं करेगा. तो select abj or you can mention the salary. So you can mention the column name. So what is the column name? Is salary. So salary from employees. So it will give the average salary of employees table. So this is a query. Let's practical it. Let's go to the ID and discuss it. So this is our table. There is ID, name, salary and department, same as the previous. So we need to find the average salary. So we just write the select AVJ of salary from employees. So we don't write the directly name. We need to specify the database name. This is Stila dot employees, and let's execute it and let's see the result. So this is the average salary. So this is the average salary of employees table. So let's see the second question. So this is the second question. Let's see the second question. So write a SQL query to find the total salary paid to employees. Like if you have a company, so how much salary we spend in our employees. So we need to find. So here we can use the sum. So we can find the total value, total salary. So we just add the sum of this salary column. So we can find the total salary. So what is the query for this? Select sum. This is a syntax. So we need to mention the salary column because I want to perform the sum on the salary column from employees. As simple as that. So we just let's practical it. So just I need to change the function. So in the place of average, we just find the cell sum and let's execute it and let's see the result. So this is the sum, like 1,70,000. 70,000. Okay, so this is the sum of our salary column. Let's see the another one. So I need to find the salary number of employees. So we need to find the number of employees. How many employees works in a company? So we need to find the employees count. So what we will use here? We will use the count aggregate function. So what is the query for this? Select. Let's change the color first. That it's looks good. Select. So count.
and we find the you can mention the specific column name, or you can mention this whole table from the employees. So this is the query. You can also mention the specific column name, like if you want to mention the salary column, so it will also count. So it's not count the null values, it's only count the non-null values. So we, as of now, we mention the full column. So let's execute it in the ID. So we just change the function name. So count. Or instead of salary, we can mention the whole table, which is star. Let's. So you can see here is a 6 column. Here is a 6 records in my employees table. Let's execute the another one. So we need to find the maximum and minimum salary. So we need to find the maximum and minimum value in the table. Minimum salary. So first we need to write the query to find the maximum salary in the employee. Like we have an employee. So what is the query? I want to find the employees record which earn the more salary. So here is a, you can see is a 30,000. Here there is a 2 records which has the 2, where the 2 employees, they find the more salary. So just write the query for this. Select, you can write max. So just change it, max salary from employees. Let's change it color so it looks good. So this is the maximum. You can find the maximum salary like this. And if you want to a minimum salary, so you can write like this. Right, just change the color first. So select min salary from employees. So let's practical it. The ID. So just change the min. Let's find the maximum first. So let don't there is a mistake. We cannot mention the whole table. We just mention the specific. We just mention the specific column. So in our case, the salary is our column. So this is 30,000. 30,000 is the maximum salary, and we want to find the minimum. Then we just replace the minimum, and the minimum salary is 10,000. We'll discuss about the ordering or sorting. So what is sorting in SQL? Sorting in SQL is to show the data any specific order. Show or arrange the data any specific order. So how can we do that sorting in SQL? So these are the 3 main factors. So what is this? This is the order by keyword. So using this, we can sort the data according to, we can sort the data any specific order. So, and this is by default ascending order, and this is descending order. If we want to sort the data in ascending order, we use the ASC, which is default. And if we want to sort the data in a decreasing order, so we use this. So what is the note? So we can perform the sorting with any data type like number, sorting, and date. So agar if I want to perform the sorting, so we can perform it any data type. It can be a number, it can be a string, or it can be a date. Okay, so now let's discuss the syntax. What is the syntax if we want to sort the data in SQL? So select star from table name. Here we need to mention the table name, like which table I want to show. And there is a order by. This is important. This is order by. Order by and column name. Here order by यहाँ indicate करता है कि इस column name को ascending order में दिखाना है, इस column name के according table को ascending order में दिखाना है. If we don't use this ascending,
this is by default is ascending order. So अगर अपन इस ASC यूज नहीं करते हैं तो ये by default ascending order में ही डेटा दिखाता है. As of now, we लिख देता हूँ कि AS. And if and this is the example of descending order, select star from table name order by and column, and we mention the which order I want. So I want a decreasing order, so I have mentioned it DESC. So let's move ahead. Sorting with multiple columns. This is also important. Sometimes interviewers directly ask you to how we can perform the sorting with multiple columns. So you have to make sure कि आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान दें. So what is the syntax if we want to use, if we want to sort with multiple columns? So select star from table name, then order by column name, column one. Like if we have a two column in my table, like salary or department. So if I want to sort the data in a ascending order of salary, so it's so the data in ascending order of salary. And if the two cells have the same salary, then if two employees have the same salary, then decreasing order of column 2, like column 2, if we have a column 2 department, then it's sort the decreasing order if we sort the data in a decreasing order of department. So we will discuss the example also, so don't worry about it. So it sort the data ascending order of column 1. If two cells of column 1 is equal, then it sort the data in descending order of column. जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि वही होता. Okay, now the time is to start some practicals, and let's see some examples. So this is there is a employees table, and these are the columns inside this table, like ID, name, salary, department, and hire date. So let's see the question. So first question. So write the SQL query to show the record ascending order of salary. So I need to write the query which show the records in a ascending order of salary. So जैसा कि मैंने डिस्कस किया ascend, if I want to sort the data in a ascending order, so we use ASC. If we don't use, then by default it sort the data in ascending order. So don't worry about it. So what is the query for this? I just write the query. So let's change the color first, so it looks good. So what is the query for this? Select star from employees. Select star from employees. Employee पूरा data उठाना है. Then we need to use the order by keyword. Order y. So this is actually sort the data, and here we need to mention the column name. Like if I want to column, if I want to sort the data in the basis of salary, so we just mention the salary. And if you want to write, you can write the ASC. If we don't write, then it's by default sort the data in ascending order. So let's see the example in ID. So here is my table, like ID, name, salary, department, and hire date. So I just show the data. Like if I want to show the data, select star from dot employees order by salary. So let's execute it. I don't write any async or decreasing order. Let's execute it. So you can see the salary, minimum salary is some upside, like 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000. So it's sort the data according to the salary. If we use the async ascending order, so it will be a same, because by default it's sort the data in ascending order. And the second question is, what is the second question? The second question is write the SQL query. Write a SQL query to show the record in decreasing order. Write the SQL query to show the record in decreasing order. So just execute the query, the ID. So we just need to write, just need to give the instruction here. So I want the record in the basis of salary in decreasing order. So just write the DESC, and it will automatically sort the data. Like you can see here, the salary, first recording salary is 30,000, 30,000, 20,000, 15,000, 12,000, and 100,000. So this is sort the data or sort the record on the basis of salary in a decreasing order. And let's see the last one. Okay, so let's see this question. So what is this question?
write the SQL query to show the record ascending order of department. Okay, we need to show the record in ascending order of department, and if the department is same, then show the record of descending order of salary. Like, okay, so I want to show the data with multiple. We need to perform the sorting in a multiple columns. Here we need to mention the department and the salary, descending order of salary and ascending order of department, where the department is same. So what is the query for this? So just need to write the query like select star from employees order by. So first we need to show the record ascending order of department. Okay, so we just need to write the DE. What is column name? Like department DEPT. Okay, DE department. So B, if you want to mention the ascending order, then you can write the AS. Yes, as of now. So ascending order of department. And what is this say? If the department is same, then show the record in the descending order of salary. So अगर इनका department कहीं same हो जाता है, then we need to make sure कि descending order of salary की descending order में आना चाहिए. So just add the comma and add the descending order of salary. So just salary DESC. So जब भी पहले सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करेगा, एंड अगर किसी का डिपार्टमेंट सेम आता है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी सैलरी को शॉर्ट करेगा. सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द शॉर्टिंग. एंड बहुत हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे क्वेश्चन आना चाहिए. एंड लेट्स एग्जीक्यूट इन आईडी. सो ऑर्डर बाय, जस्ट नीड टू राइट द ऑर्डर बाय टीपीटी एएससी. असेंडिंग ऑर्डर में डिपार्टमेंट चाहिए, एंड इफ इन केस अगर डिपार्टमेंट सेम होता है, then we need to decreasing order of salary की decreasing order में चाहिए. So salary DESC, and let's execute it. So what's wrong with this query? So there is no any column name department. Its name is department, not DPT. There is a mistake. So make sure कि column का नाम सही रहे. So here you can see it show the data department name, department wise. Like first is C is a small, and after that E, X, and then I. Then IT is same. Then it sort the data in a decreasing order. So here is a decreasing order of salaries. Salaries first come is 30,000, and now and after that it comes in 10,000. So this is, and after this there's a one more important question that most of the interviewer ask to know the knowledge about the SQL. So what happens if we sort the column containing null? If we sort any record on the basis of any column and has column contain the any null value, so how the SQL treat in null value in sorting? So in the most SQL database, null value are treated as the lowest possible values. Like null value सबसे छोटी वैल्यू होती है, इट्स ट्रीट की जाती है एसक्यूएल के द्वारा. सो व्हेन द सॉर्टिंग इज असेंडिंग ऑर्डर, इट्स सो द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू. जब अपन असेंडिंग ऑर्डर में किसी कॉलम को सॉर्ट करते हैं और अगर उसमें नल वैल्यू है, देन ये सबसे ऊपर सॉर्ट करे किया जाएगा. एंड इफ वी सॉर्ट द डेटा इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन इट्स सो इन द सबसे लास्ट में. सो लेट्स टेक द एग्जांपल. सो आई एम मेकिंग इट नल. जस्ट रिमूव इट, then apply. So here is a null value. So if I sort is a department wise in ascending order, so it's so at the there is department which is null is so on the top of the table, because its priority is low, because it's the lowest value. So it's so the first. And if we so then a decreasing order, let's see what will happen. And it's so the at the end, because it's a decreasing order, right? It's a very low value, it's so at the end. So this is all about the uh, ordering or sorting. How can you can do that? And we will cover in each and everything about the sorting. And make sure कि आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें और जो चीज बताई है बहुत अच्छे से देख लें. We have discussed about the nth highest salary. तो अगर आप एसक्यूएल के इंटरव्यू देने देने जा रहे हैं और देंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली
90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, nth हाईएस्ट सैलरी, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट एसक्यूएल इंटरव्यू question. Here is the employee table. Inside this table, we have some column like ID, name, salary, and department, and hire date. So this is our employees table. So there is a two way you can find the nth highest salary. So here is two way. So what is the first way? First way is a simple query using maximum and sub query. So पहला तरीका तो ये है कि अगर अपन फाइंड करना चाहते हैं एनएच हाईएस्ट सैलरी, तो अपन सिंपल मैक्सिमम एग्रीगेट विच इज एग्रीगेट फंक्शन, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने डिस्कस बहुत डिटेल में बताया है एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में, सो आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। एंड सब क्वेरी, सो यूजिंग मैक्स एग्रीगेट फंक्शन एंड सब क्वेरी वी कैन फाइंड द एनएच हाईएस्ट सैलरी। And second way is query using count distinct to find the highest salary. I will discuss what is the difference between this. And this is most important. This is the second way. And using this, you can find the nth highest salary in any database. Like it can be Oracle, it can be a Postgres and MySQL, and also in this also. So let's discuss. And after that, we will discuss about the find the nth lowest salary, which is important in a इंटरव्यू पर्पस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में आपसे मैक्सिमम पूछी जाती है, मिनिमम भी कभी कभी पूछ ली जाती है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो। सो व्हाट इज द क्वेरी फॉर दिस? आई वांट टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सेल। सो नाउ इट डिस्कस आई वांट टू फाइंड द, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया जाता है कि आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी बताइए एम्प्लॉयज टेबल में और एनी अदर टेबल। सो व्हाट इज द क्वेरी फॉर दिस? सो इस टेबल में सैलरी कॉलम है। So what is the second highest salary according to me? So first is 30,000, and the 30,000 is 12 two times. So don't consider that double. So the second highest salary आपकी 20,000 होगी, because 30,000 के बाद 20,000 ही second highest है इसमें। Okay. So what is the query for this? So just see the, just focus on the approach. So first I need to select the maximum salary. So select max salary from employees, where this is a conditional statement, where and where salary is not equal to select star, select maximum salary from employees. So let's change the color so it looks good. So this is a query. So it will first find the maximum salary of the employees table. So first it will find the this one. So this is the highest salary of the table. So 30,000. And after that, it is a subquery. So it will iterate one by one and find the maximum salary and compare to the maximum salary. The highest maximum salary 30,000, and I want to find the second highest, which is uh, which is the maximum salary, and it is not equal to 30,000. So what is the highest salary which is not equal to 30,000? So 20,000, which is highest salary or not equal to 30,000. So this will find the second highest salary. Let's execute in the. So this is the table. This is the employees table. Inside this ID, name, salary, department, and hire date. So I want to find the second highest. So what is the query for this? The first approach. Max salary from. So I need to mention the database name also, because it's a SQL database. The employees where salary is not equal to select max salary from ELA dot employees. So here is a mistake. It's not okay. So from employees, this is the query. So let's execute it. Let's see. Yes.
This is the 20,000. This is the our answer. 20,000, which is the second highest salary in our table. So this is simple. And so if we want to find the fifth highest salary or sixth highest salary, so we need to again add the multiple subqueries to find the highest salary. So इससे बचने के लिए देयर इज अ सेकंड ऑप्शन विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट. तो अगर आप ये वाली अप्रोच इंटरव्यू में बताते हैं तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज मैंने भी कई सारे इंटरव्यू फेस किए हैं. सो इंटरव्यू का थिंकिंग होती है कि आप ये वाली अप्रोच बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, which is compatible with other databases also. So let's discuss the second way. So what is the second way? So I need to find the second highest cell. First we focus the second highest cell. So what is the query for this? Just add select. Here we need to take the reference. So first take the reference e1 dot salary from employees e1. So this is I have take the reference of this table. So this is e1 which is targeted this employees table. This is employees e1. तो e1 dot salary which is इस टेबल में से सैलरी फाइंड करना है. ओके, बेयर this is a formula n minus 1 is equal to n is it can be if you want to fifth highest cell in the table, then you can mention the fifth here. You can find if you want to a sixth, then you can six here. So according to you can put the data. So what is this? Okay, so again we need to select. Here we need to count. This is aggregate function. Count of E2. Here we again need to take the reference of this table. We can make the another reference name as E2 of employees table. So count E2 dot salary from employees E2. Where this is most important condition. Using this condition, we can find the nth highest salary. So E2 dot salary. Sorry. Okay. So E2 dot where E2 dot salary is greater than E1 dot salary. So here we make the two references E1 and E2 of employees table. So first we need to find the salary. So let's execute in the table, and after that I will explain you. So select star from, just see the table. First dot employees, execute it, and here is a table. So here is a two duplicate 30,000 and 30,000. First we make it 25,000, and then I will explain you what's wrong with this. And let's execute it. So then we have a unique salary of every employee. Then we can use this query select even dot salary from dot employees where n minus 1 equal to select E2 count. Basically, I need to find the count E2 dot salary from dot employees where E2 dot salary is greater than E1 dot salary. So, and let's execute. So there is something mistake. What is the E1 dot salary? Oh, here is not. I forgot to mention that. Take the reference of E1. Same thing applies here. So make sure कि आप reference ले लें, like employees table का E1 और E2 अलग अलग target करने के लिए basically ये reference लिए जाते हैं. ठीक है. So now I need to mention the if I want to find the second highest, put the 2 in the replace one. This is 2 minus 1 is second basically 1. So if I want to find the second highest, then we need to mention the
1 here. So basically n minus 1. I need to put it here. Let's execute it. And you can see the second highest is uh, 25,000. So basically, so now this is the main question that every interviewer asks you. Then you will give this approach. So let's select star from employees. So this is our table. So now I am making the two duplicate salaries like 30,000 and 30,000, like 30,000 and 30,000. So we have two salary 30,000 and 30,000, and according to the answer, the second highest should be a 20,000. But when we run this query, then it will not give the answer because we have a duplicate data. So to solve this problem to duplicate data, you need to mention the distinct keyword. Distinct is basically a keyword which is used to find the unique data in the table. So I want to मैं चाहता हूँ कि unique salaries ही आए मेरे इसमें. Then let's execute it and it will read the, and you can see the result. The result will be a 20,000, which is the second highest salary in the table. So in this approach, you can find the any number of highest salary. Like if you want to a six highest salary, then just mention n minus one, which is 5, then 5. So it will give the fifth highest salary, a sixth highest salary. If you want to a third highest salary, then just mention the n minus one. The 3 minus 1 is 2. So this is a third highest salary. Third highest salary is 50,000. And let's see the last one, which is important in an interview purpose, because sometimes interviewers directly ask you so what is, if I want to the lowest salary, then how can, so just replace the operator. So I just need to replace the operator, which is I want to, here I choose the e2 dot salary is greater than e1 dot salary. Just replace the this operator, so it will give the lowest value, the highest salary with. And if I want to second highest salary, then what is this? Second lowest salary, sorry, second lowest salary is 20,000 12,000. So this is all about nth हाइस्ट सैलरी. तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो प्लीज एक बार रिवाइज जरूर कर लें आप. We'll discuss about the group by. ग्रुप बाय बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू योर आपके प्रोजेक्ट के पर्पज से अगर आप अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस यूज कर रहे हैं, देन ग्रुप बाय इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड इंटरव्यू के पर्पज से तो ये इंपॉर्टेंट है ही. तो लेट्स डिस्कस द about the group by. What is group by? Group by is a SQL clause. It is a clause in SQL which is perform the operations in the in a group of data. एक ग्रुप ऑफ डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है. एंड ये मोस्टली यूज होता है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ, लाइक सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस एग्रीगेट फंक्शंस. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, यू कैन, आप जा सकते हैं वीडियो देख सकते हैं. सो व्हाट इज द पर्पस? सो group by rows. The group by clause in SQL is used to arrange the identical data into a group. तो ये मल्टीपल रोज को एक ग्रुप में, आइडेंटिकल डेटा को एक ग्रुप में लाता है, लाइक ए grouping perform करता है. And we will discuss with example, so it will clear to you. And for aggregation, it allow to perform the aggregate function. ये allow करता है कि आप aggregate functions perform कर सकते हो, like sum, count, average, maximum and minimum. So this is all about the purpose of group by. What is the purpose? We have discussed. And what are the key points? This is most important. Key points. The columns in select. The columns in select statement. जब अपन select statement में कोई भी कॉलम लिखते हैं, it must be either in the group by clause or it can be aggregate function. ये केवल दो ही हो सकते हैं. या तो जिसपे आप aggregate function लगा रहे हो वो कॉलम select के साथ आ सकता है, या aggregate function वाला कॉलम select के साथ आ सकता है. You will see the example. Don't worry about it. एंड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होता है, समटाइम्स इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ग्रुप बाय, बेयर एंड ऑर्डर बाय में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन किसका होता है. तो जो ग्रुप बाय इज अप्लाइड आफ्टर द बेयर. तो बेयर सबसे पहले आता है एंड आफ्टर दैट ग्रुप बाय आता है. एंड ग्रुप बाय किसके पहले आता है? ऑर्डर बाय के पहले आता है. इट मीन्स ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में आता है. बेयर, ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय. सो एंड
What is the example? You can see the example. Select, you can select column 1 and column 2 and make sure कि आप अगर यहाँ select के साथ ही column 1 column 2 आ रहे हैं तो it can be a group by, तो ये group by के साथ भी होने चाहिए था, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। एंड एग्रीगेट फंक्शन भी यहाँ हो सकता है, दो ही चीज हो सकती है, या तो ग्रुप बाय वाला और ग्रुप बाय वाला कॉलम और एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम टेबल नेम एंड ग्रुप बाय कॉलम 1 एंड कॉलम। And so now the time is to see some interview question and clarify your concept about the group by. So here is the employees table, and inside this table we have 5 columns: ID, name, salary, department, and hire date. And the first, what is the first question? So first question is a SQL query to find the highest salary of each department. This is a most important question of the interviewer. Each department, हर department में highest salary बताओ, मतलब like we have a 3 department like EX, CSE and IT, तो हर department की अपनी अपनी highest salary बताओ। जैसे अगर अपन EX को compare करें तो इसमें highest salary है 30,000, एंड अपन कंपेयर अगर CS की करें तो ये 20,000, एंड IT करें तो अगेन 30,000। व्हाट इज द क्वेरी फॉर दिस? सिलेक्ट, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट, बिकॉज डिपार्टमेंट पे अपन ग्रुप बाय परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ डिपार्टमेंट ही आ सकता है, तो अब अगर अपने केस में डिपार्टमेंट DEPT, ओके DEPT एंड एग्रीगेट फंक्शन। तो व्हाट इज द एग्रीगेट फंक्शन? यहाँ पे क्या यूज होगा, अपन को हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना है, सो वी यूज द मैक्स एग्रीगेट फंक्शन, मैक्स दिस सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, एंड दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट पे लगाना, बिकॉज अपन को ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी चाहिए। यहाँ DEPT, लेट्स चेंज द कलर सो इट्स लुक्स गुड। So this is the query to find the highest salary of each department. Let's execute an ID. So this is our table, this is our employees table, and inside it the ID, name, salary, department, and hire date. Okay, so I want to find the maximum salary of each department. So what is the query for this? Like if I DEPT department, not DEPT, in this here is a department and max salary, because I want to find the maximum salary of each department. From need to mention the database name and then our table name. So table dot employees and group by, एक group by डिपार्टमेंट पे लगाना, बिकॉज अगर आपने यहाँ सिलेक्ट के साथ जो कॉलम यूज होगा उसी पे ग्रुप बाय, या ग्रुप बाय जिस पे लगा रहे हो वो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही आ सकता है। डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, and let's execute it, and you can see the result. The CSE, the maximum salary is 20,000, IT is 30,000, EX also is 30,000. So this is simple. Let's see the another one. Now what is the another one? Select SQL query to find the average salary of each department. So this is also simple. Just I want to find the average salary of each department. So what is the average salary? So how can we write the query? Just select DPT department and ABJ. Here we use the average aggregate function ABJ, because I want to find the average salary of each department from employees group by department. So this is the, let's change this color. This is the query to find the average salary. अपन इसको ID पे भी करके देख लेते हैं एक बार. So just replace it because I want to find the average salary ABJ. तो ये average salary दे देगा each department. तो CS की जो average salary है वो 70,500 and IT की 20,000 and EX की 21,000. As simple as that. And what is the last one? So write a SQL query to find the count of number of employees in each department. Like this is also important of interview purpose, because sometimes interviewer directly ask you to find the number of employees of each department. Like हर department में कितने employee काम कर रहे हैं. What is the query? What is the query for this? Change its color. Select department, because it's a department, and I want to, so what is this? I use the count aggregate function because I want to find the number of employee of each department. So you can count a star, or either you can
mention the any specific column. So as of now, mention the whole table, which is star. Employees group by DPT. Each department का count कितना है इस query. So let's execute in the ID. Select department and count of stars from employees per department. Let's execute it. What's wrong with this? See if the DB is okay. So I need to mention the database name, which is again तो इसकी spelling mistake. So make sure कि आप सही spelling लिखें. And you can see the result. What is the CS में 2 employees हैं, IT में भी 2 हैं और EX में भी 2. आप देख सकते हैं इधर CS में 1 2, IT में भी 2 and EX में भी 2. So this is all about the group by, and we will also use some जब हम और इंटरव्यू के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां भी ग्रुप बाय यूज होगा. मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें. और इंटरव्यूअर डायरेक्टली तो आस्क आउट करता ही है ग्रुप बाय के क्वेश्चन लाइक दिस. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप बाय. We will discuss about the having clause, which is most important. If we talk about the interview purpose, the having clause, अगर interviewer आपसे group by पे question कर रहा है, then he will definitely ask about the having clause because there is a very close relation between group by and having clause. So let's discuss about this. So first of all, we need to understand the what is the difference between where and having, because both दोनों ही एक जैसे ही हैं और दोनों ही filtering data filtering का काम करते हैं. So first we discuss about the difference. So where is used to filter row before grouping. When we used group by in our query, so it creates some groups. We have seen the example in the last video, like we want to has the maximum salary in every department, so it's divide the department wise group. And so where is used to filtering the data before grouping. ये group बनाने के पहले अगर we want to filter the data before creating the group, so we need to use where clause. And having clause is used to filter group after aggregation. Like when we create the group and after that we want to filter some data. मैं maximum salary चाहता हूँ each department की, लेकिन वो salary more than something, more than 15,000 or more than 20,000. So here we need to use the having clause. We will see the example, so it will clarify to you. So this is notes. This is most important. The where clause is used to filter row before any grouping are made with the group by clause. However, if you need to filter group after the group of grouping operation, you should use the having. This is same because where clause अगर अपन चाहते हैं कि filter करें data before creating the group, then we use the where clause. And after that, if we want to the aggregate function or group पे अगर कुछ अपन filter करना चाहते हैं, then we use the having clause. And let's see the example, so it will more clarify to you. So this is the employees table, and inside this table there is a 5 columns like ID, name, salary, department, and hired. And in this example, we will also see the how to compare to string. Like if we want to filter the data on the basis of hire date, like we will compare the date. We will also learn how to compare the date in SQL. So it will very beneficial to you. So let's see the example. So the first query is SQL query to find the highest salary of each department, hire date of employee between 2019 to 2018. मतलब अपन को डेटा फिल्टर करना है, मतलब हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी चाहिए, लेकिन वो एम्प्लॉय की जो हायर डेट है वो ईयर 2018 to 2019 होनी चाहिए. दिस एक कह रहा है. तो it will clarify your concept about the where and having. It will solve all the doubts between the where and having. So what is the query for this? Select department. In this, in our case, the DBT is the department column. Okay, and then maximum salary, because we find the maximum salary of each department from table name
employees bear. Here we need to use the bear because before grouping, अभी अपन ने grouping नहीं लगाई डिपार्टमेंट, तो अपन ने in the last video we have seen the order of execution, like group by का execution क्या होता है, bear का execution कैसे होता है, और order by का। तो bear हमेशा group by के पहले आता है, bear हमेशा group by के पहले आता है, तो इधर ही bear लगेगा। bear date, तो hire date, hire underscore date between 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 कहता है 2018, so it will the order of date in SQL is YYMMDD, so make sure कि आप वही order follow करें। so 2018 and 01 because first month and 01, it's okay। so between and this is most important, 2018 से 2019, so 2019 12 is last month and the last date of 21, which is this time। okay, so this is the comparison if you want to compare the date, to make sure कि आप इस डेट सिंगल कोड में हमेशा रहे एसक्यूएल में। एंड सेकंडली कि अगर वी वांट टू कंपेयर टू डेट्स के बीच का कोई डेटा चाहिए तो वहां अपन बिटवीन यूज कर सकते हैं। दिस इज, ये मुझे बताना था, बिटवीन ये रह गया था अपन के क्लॉज में। बिटवीन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इट इज आल्सो ऑपरेटर व्हिच इज यूज्ड टू फिल्टरिंग द डेटा लाइक बिटवीन टू डेट्स ऑन टू। ओके, दिस इज, तो ये इंटीजर पे भी काम करता है, लाइक वी वांट टू बिटवीन सैलरी 2000 टू 3000 के बीच की सैलरी फाइंड करना, देन यू कैन यूज द बिटवीन पेयर। ओके, सो देन group by need to use the group by here and DEPT because here we need to mention the department because अगर अपन ने select के साथ जो कॉलम लिया है वो group by के साथ लगाना जरूरी है, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, जब भी अपन मेंशन ग्रुप बाय लगाएं किसी भी चीज को, वो इसे यहाँ पे आ सकती है और एग्रीगेट फंक्शन भी आ सकता है, दो चीजें ही आ सकती है। मेक श्योर कि आप ये ध्यान दें। एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो ये अपन को मैक्सिमम सैलरी इस डिपार्टमेंट की देगा और उनको एक्सक्लूड कर देगा जिनकी हायर डेट 2018 2019 के बीच में नहीं, उनको एक्सक्लूड करेगा। इंक्लूड किसको करेगा? जिनकी हायरिंग डेट 2018 से 2019 के बीच में। एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। सो लेट्स execute in a ID. Let's see the employee table first. So this is our employee table. Inside it, ID, name, salary, department is hired. So write the select department, because in this table name is department, not DEPT. And maximum salary, because I want the maximum salary of each department from database name, then table name, employees, and then the conditional statement. The conditional statement is the pair between hire date between 2018 01 and 2019 12 31 and group by D. And let's execute it. There is something wrong, which is DEPT, not DEPT, it's a department. This is now it will return the three data like CSE में 20,000, IT में 30,000 and DX में 30,000, और इनने केवल इन्हीं को इंक्लूड किया है जिनकी हायरिंग डेट 2080 से 2090 के बीच में। तो यहाँ पे एक चीज और मैं बताना भूल गया कि इफ ये अभी मैक्सिमम सैलरी आ रहा है कॉलम का नेम, सो देयर इज अनदर क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड बाय द इंटरव्यू, बहुत जगह पूछा जाता है कि एलियासिंग इज इंपोर्टेंट because if we want to show the data according to it, like if I want to change the name of maximum salary because it readable नहीं लगता है कभी कभी, then we here need to begin aliasing, like इसका नाम अपन चेंज कर सकते हैं। so what is the, so मैं नाम इसका रखता हूँ max underscore salary, let's execute it, let's see the is it a maximum underscore salary। so aliasing के द्वारा, so what is aliasing it's just nothing but we can change the column name and show the data in a readable form, so it is just a
ये चीज मुझे बतानी थी. And let's be a second one and write the SQL query. Okay, so here we solve your doubt कि having clause कहाँ लगता है actually में. So SQL query to find the highest salary of each department where highest salary is greater than 15,000. Sorry, this is 50,000. Okay, so let's see the query. What is this query? So select. Let's change the color first. Select. Select EPT maximum salary from employees. In this place we cannot use the bear because we need to filter the data after grouping, because the salary of जो सैलरी आपकी ग्रुपिंग के बाद बनेगी हायर सैलरी वो ग्रेटर देन 15,000 होनी चाहिए. तो हियर वी डोंट यूज द बेयर क्लोज. हियर वी नीड टू यूज द एक्चुअली हैविंग क्लोज का यूज होगा यहाँ. सो ग्रुप बाय DPT, ग्रुप बाय के हिसाब से डिपार्टमेंट, एंड देन वी यूज द हैविंग मैक्स salary is greater than 15,000. So operators we already covered. The conditional statement, this is also a conditional statement. So let's execute in an ID, so it will more clarified. So just see the table first. This is a table. So select department and maximum salary is greater, maximum salary from employees, group by department. Department, group by department, having max salary is greater than 15,000. So this is basically a having clause where we need to mention the database name. Okay, let's execute it, and you can see the result. Which is maximum salary is 15,000. So there is no data of 15,000. So we change it into a 20,000. So more than 20,000. Let's see what will happen. So it will filter the data. It will only give the maximum salary which is greater than 20,000. So it will give the ID 30,000 and EX 30,000. So this is simple and ये बहुत important है इंटरव्यू के पर्पज से. हैविंग क्लोज और डिफरेंस भी कभी पूछ लिया जाता है बेयर और हैविंग में. तो बेयर कहाँ लगता है? बिफोर ग्रुपिंग एंड हैविंग आफ्टर ग्रुपिंग. सो we will discuss about how to handle the null values in SQL. So this is very important question for the interview purpose because कभी-कभी इंटरव्यूअर डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि नल वैल्यू को कैसे हैंडल करते हैं एसक्यूएल में, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का. सो लेट्स डिस्कस द अबाउट इट. सो व्हाट इज द की पॉइंट? सो नल वैल्यू रिप्रेजेंट द मिसिंग और अननोन डेटा. तो नल वैल्यू रिप्रेजेंट क्या करता है? समथिंग मिसिंग और अननोन, जो पता ना हो या जो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं. दिस इज कॉल्ड नल वैल्यू. इन अ रेगुलर कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल एंड नॉट इक्वल डू नॉट वर्क विथ नल. ये बहुत बड़ा कैच होता है इसमें कि इक्वल एंड नॉट इक्वल नल वैल्यू के साथ वर्क नहीं करता है. सो वी विल सी एग्जांपल आल्सो, सो इट विल मोर क्लैरिफाई टू यू. एंड देन हाउ टू हैंडल द नल वैल्यू. अगर ए इक्वल एंड इक्वल टू नहीं वर्क करता है देन हाउ कैन आई हैंडल इट? सो इसके लिए एसक्यूएल में दो ऑपरेटर्स दिए हुए हैं या क्लॉज बोल दो, कुछ भी बोल दो. इट इज और इज नॉट. is and is not. This is a operator or clause. Use is null to check the null values. To is or is not provide किए हैं SQL ने to handle the null value. So we will see the example. So let's see the example. This is employees table and inside it given a 5 column ID, name, salary, department and hire date. And you can see here is a salary is null. Aman salary is null. So what is the question? The question is write the query to find the record which department is null. So in this video, so make it null first.
सो मैं रवि का ये डिपार्टमेंट नल बना देता हूँ। ओके, सो दिस इज नल। तो अपन को फाइंड ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करना है जिसका डिपार्टमेंट नल हो। सो अगर अपन क्वेरी लेट्स सपोज ऐसे लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर DEPT. In this our example, department column is DEPT. Department DEPT. Okay, department is equal to null. तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि नल के साथ कभी भी इक्वल टू वर्क नहीं करता है। ये ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेम्बर, नल के साथ इक्वल कभी काम नहीं करेगा और ना ही नॉट इक्वल काम करेगा। सो to find the null to find the record where department is null, we can use the is and is not. So here we use the is. Department is null, so it will give the record where department is null. So basically it will give this record. Okay, let's see the second question. So write the query to find the record where salary is not null. So where salary is not null. So here is salary is null और not null किसकी है? अमित, अनुपम, रवि, राम एंड हर्ष। दीज आर द रिकॉर्ड्स वेयर सैलरी इज नॉट नल। तो ये रिकॉर्ड अपने पास आना चाहिए। तो अगर इसके लिए अपन क्वेरी लिखें तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज नॉट, हियर वी यूज द इज नॉट। तो मैं हाईलाइट भी इसको कर देता हूं, इज नॉट। ओके, तो इज नॉट एंड दिस इज इज। तो नल वैल्यू को हैंडल करने के लिए इज और इज नॉट लगते हैं। इज नॉट, सैलरी इज नॉट नल, दिस वन। सो दिस इज द क्वेरी। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेरी है और ये आपको आनी चाहिए अगर आपको एसक्यूएल आता है। एंड सो लेट्स एग्जीक्यूट एन आईडी, इट विल आपको क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज अवर टेबल, एम्प्लॉयज टेबल, वेयर आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट इज हायर डेट। सो आई वांट द रिकॉर्ड वेयर सैलरी। सो फर्स्ट वी मेक इट anything is null. Okay, so let's make it its department is null and your salary, अमित की सैलरी भी null अपन कर देते हैं। ओके ओके, so these are the null values. Now select, now I want the record where department is null. Select star from employee. In this SQL we need to specify the database name. So dot employees where, okay, for departments, in this case departments are not DEPTs, also a department is equal to null। अब ये अपन इक्वल टू लगा के देखते हैं एंड देखते हैं कि चलता है कि नहीं। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट इट। सो नहीं चला क्योंकि जिसका डिपार्टमेंट नल है तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया है। इफ आई यूज इज नल देन लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड यू कैन सी द रिजल्ट। दिस इज वेयर डिपार्टमेंट इज नल, अमन का डिपार्टमेंट नल है एंड दिस विल रिकॉर्ड कम्स, दिस रिकॉर्ड विल comes when we execute this query because इसका डिपार्टमेंट null है। एंड दूसरा क्या था, इज नॉट। अगर इज नॉट लगा दे देन पूरी नॉट वाली आ जाएंगी, जिसका डिपार्टमेंट नल नहीं है वो रिकॉर्ड आ जाएंगे एंड यू कैन सी द रिजल्ट वेयर डिपार्टमेंट नल नहीं है, सैलरी नल है, उससे कोई फर्क नहीं क्योंकि उस पर ने कंडीशन लगाई नहीं है, डिपार्टमेंट पर नल नहीं होगा। ओके, दिस इज सिंपल एंड एट द एंड वी डिस्कस द समरी। तो व्हाट इज द समरी? नल कैन नॉट बी कंपेयर्ड यूजिंग इक्वल एंड नॉट इक्वल। तो इंटरनली ये इसको यूज नहीं करता है। यूज इज नल एंड इज नॉट नल टू हैंडल द नल वैल्यू इन कंडीशन। नल वैल्यू को कंपेयर कभी इक्वल एंड नॉट इक्वल से नहीं करना है, हमेशा इज एंड इज नॉट से करना है। रिमेंबर, नल इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू, ये किसी वैल्यू के एब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एसक्यूएल ने अपन को ये ऑपरेटर दिए हैं, इज एंड इज नॉट। ओके, सो दिस इज कंप्लीट। विल डिस्कस अबाउट द बेसिक पैटर्न मैचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो उस हिसाब से भी, एंड स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये अगर आप एसक्यूएल का इंटरव्यू कहीं फेस कर रहे हो और करने वाले हो तो मोस्ट 100% चांस है कि पैटर्न मैचिंग से एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट एंड basic rule about the pattern matching. So what is the rule to, if I want to solve any pattern matching questions, what is the basic rule in my mind? So first is percentage and second one is underscore. So percentage represent the zero or more character.
It can be anything, like it can be a one character or zero character, and underscore represent the exactly one character. Always remember कि percentage zero or more, zero or more than one कितने भी character count को कर सकता है, and underscore only represent the one character. We will see the example, so it will clarify to you. So let's discuss the example. So there is an employee table, and inside this table we have a 5 column: ID, name, salary, department is hired. So this is the first question. Find the all employees whose name start with letter A. तो whose name start with capital A. से किसी का नाम अगर स्टार्ट हो रहा है, I want that record, that particular record. So what is the query? So before writing the query, the first see the about the like. Like is the clause which is used to used to compare the pattern matching question. Like अगर अपन underscore और परसेंटेज का यूज कर किसी पैटर्न को मैच करना चाहते हैं, तो वहां we need to use the like. Okay, so always remember. Let's discuss the query. So what is the query? To find the employees whose names start with capital E. So select star from, because I use star here because I want the whole report. That's why I use a star here. If I want any particular column, then you can mention the column name also. Like star employees. So then we use the where because it's a conditional. इसी condition के बेस पे अपन जब filter करते हैं data, so where we need to use the where name, अपन name के बेस पे pattern मैचिंग करना चाहते हैं, where name, so then the column name, this is the column name, and after that we will use the like. This is most important, यही मेन फैक्टर है इसका, है ना. तो लाइक अगर किसी पैटर्न मैचिंग कर रहे हैं, देन लाइक इट्स वेरी यूजफुल. लाइक हमेशा यूज होता है. बेयर लाइक की आप पैटर्न मैचिंग नहीं कर सकते. बेयर लाइक, बेयर नेम, लाइक, एंड अब यार वी नीड टू मेंशन द एक्सप्रेशन. जो एक्सप्रेशन अपन बनाएंगे पैटर्न मैच करने के लिए, इसको अपन एक्सप्रेशन बोलते हैं कि पैटर्न को किस टाइप से मैच किया जाए. तो मेक श्योर कि हमेशा ये सिंगल कोट्स के अंदर ही आता है. तो मेक श्योर कि आप इसको सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखें, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. ओके, सो मैं चाहता हूँ कि पहला लेटर ए हो, कैपिटल ए हो, पहला लेटर ए हो. वैसे ही कैपिटल और स्मॉल अपन वो नहीं करते अभी पैटर्न मैचिंग में. तो वी नीड बी एन टू ए, तो पहला लेटर ए हो बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेटर, है ना. एंड आफ्टर दैट कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ अपन ने रूल पढ़ा था कि आफ्टर दैट कुछ भी, ये परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करता है? जीरो और मोर कैरेक्टर्स. तो ये कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, या तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं. लेकिन मैं चाहता हूँ स्टार्ट ऐसे हो, तो इसके पहले तो कुछ नहीं आना चाहिए, ए ही होना चाहिए. आफ्टर दैट इट कैन बी एनीथिंग. परसेंटेज एनी इंडिकेट करता है कुछ भी, जीरो कैरेक्टर या कुछ भी, बहुत सारे कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, कुछ भी, देन वी यूज द परसेंटेज, है ना. तो दिस इज द क्वेरी and we will execute an ID, so it will also very clarify to you. Okay, let's see the another one. So find the employees whose name contain the A letter. अब स्मॉल ए या कैपिटल ए कुछ भी बोलो, कहीं भी कंटेन कर सकता है, कहीं भी कंटेन कर सकता है. मान के चलो पूरे नेम में अगर एक एक बार भी ये कहीं भी आ रहा है, देन वो रिकॉर्ड आना चाहिए. सो व्हाट इज द क्वेरी? फाइंड द एम्प्लॉयज हुज नेम कंटेन द लेटर. सो सेलेक्ट, ये तो अपना रहेगा ही, select star from employees where, this is conditional statement, we have already discussed in our previous videos, so you can आप जाके देख सकते हो ना. where name, फिर नेम पे है, नेम लाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, we have already discussed ना. तो लाइक एंड फिर अपन को सिंगल कोट्स के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर कि एक्सप्रेशन हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर ही आएगी. इंटरव्यू में कई बार मिस्टेक हो जाती है कि आप सिंगल कोट्स नहीं लगाते ना, तो मेक श्योर कि आप सिंगल कोट्स लगाएं. देन अब क्या बोल रहा है कि एक कहीं भी कंटेन कर सकता है, पहला लेटर नहीं, पहला लेटर नहीं है. तो व्हाट वी नीड टू यूज परसेंटेज, क्योंकि पहले कुछ भी आ सकता है, पहले कुछ भी आ सकता है. कैन बी, कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं, या फिर कोई भी कैरेक्टर नहीं हो, तो ये जीरो या मोर देन वन कैरेक्टर, कितने भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. देन वी यूज ए, एंड आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो यूज दिस. सो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि आगे कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग के, एंड इसके बाद में भी कुछ भी आ सकता है, कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर होगा पूरे स्ट्रिंग में. देन वो रिकॉर्ड मुझे दो. लेट्स चेंज इट कलर. समझ में आया? दिस इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है. तो आपको बस समझने की जरूरत है. परसेंटेज का मतलब होता है कुछ भी. इट कैन बी अ जीरो कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, टू कैरेक्टर और मोर देन टू कैरेक्टर्स. ओके, कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं. लेट्स डिस्कस द अनदर वन. So find the employees whose name are exactly 5 character long. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं चाहता हूं कि जो
जिस स्ट्रिंग इसकी नेम में केवल 5 कैरेक्टर ही हो, वो रिकॉर्ड चाहिए। सो उसके लिए क्वेरी क्या होगी, वी यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नेम लाइक। हाँ, नेम कैसा होना चाहिए, 5 कैरेक्टर वाला। तो हियर भी यूज, अपन ने अभी एक चीज डिस्कस की थी, अंडर स्कोर, ये रिप्रेजेंट करता है ओनली 1 कैरेक्टर, इट कैन बी, ये कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है। तो अपन को तो कोई से मतलब नहीं है, अपन को केवल 5 कैरेक्टर होने चाहिए। सो प्लीज जस्ट काउंट द, भी सिंगल कोड में अपन रखेंगे अंडर स्कोर एक, तो 5 बार, और 5 ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 2 3 4 5, ये 5 अंडर स्कोर, एंड दिस इज द क्वेरी। सो लेट्स चेंज दिस कलर, looks good. So this is the query. तो underscore indicate only 1 character and percentage can be 0 और कितने भी हो सकते हैं ना। Then the last one is find the all employees whose name start with A and end with T, जिसका A से स्टार्ट हो रहा हो और एंड हो रहा हो T से, हमेशा A से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप अगर आपने समझा होगा तो आप इस वर्क कर सकते हो, तो वीडियो पॉज करके जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नेम लाइक। तो अपन को एक्सप्रेशन देख लिखनी है, क्या एक्सप्रेशन होगी, स्टार्ट विथ ए, इसके पहले कुछ नहीं, हमेशा ए से ही स्टार्ट होगा, वी यूज द ए। एंड एंड विथ टी है, एंड हम कैसे होना चाहिए, टी से होना चाहिए, और बीच में कैन बी एनीथिंग, बीच में कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी के लिए क्या, परसेंटेज हमेशा लगाते हैं, देन वी यूज द टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। लेट्स डिस्कस इन द आईडी, सो इट विल मोर क्लैरिफाइड। ओके, पहला क्वेश्चन आपका था कि ए से, कैपिटल ए से, सो दिस इज अवर टेबल एंड इनसाइड इट आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड हायर। ओके, तो मैं चाहता हूँ, आई वांट सेलेक्ट स्टार, मैं रिकॉर्ड चाहता हूँ वेयर, वेयर वेयर नेम लाइक, नाम कैसा होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए ए। तो अगर स्टार्ट होना चाहिए ए से, एंड आफ्टर दैट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी के लिए क्या लगाते हैं, परसेंटेज। लेट्स एग्जीक्यूट इट, एंड आप देख सकते हो कि जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में ए है, वो रिकॉर्ड आ गए। एंड दूसरा सेकंड था आपका कि ए कहीं भी हो सकता है, कैन बी एनी प्लेस, लाइक यहाँ जैसे बीच में है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ए होना चाहिए कहीं पूरी स्ट्रिंग में। तो दैट्स परसेंटेज ए, स्मॉल ए कुछ भी ले लो, क्योंकि बिकॉज ये तो वर्क नहीं करेगा, स्मॉल ए या कैपिटल ए, तो ए मतलब स्मॉल ए ले लो चाहे कैपिटल ए, वर्क सेम ही होता है ना, तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता व्हेन वी कंपेयर द पैटर्न मैचिंग यूजिंग द लाइक। ओके, एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो आप देख सकते हो कि जिनके नाम के बीच में ए कहीं भी एक बार आ रहा है, एटलीस्ट एक बार तो आना ही चाहिए, बाकी इट कैन बी कितने बार भी आ सकता है ना, तो ये कहीं भी आ रहा है, श्याम में ये है, यहाँ में भी, तो ये आ गया है, पूरे रिकॉर्ड आ गया। एंड आपका और कौन सा था, अब ये थी कि हाँ 5 कैरेक्टर होने चाहिए, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, नेम में 5 कैरेक्टर होने चाहिए। मैंने बोला था कि पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को इंडिकेट कौन करता है, अंडरस्कोर, देन वी यूज द 5 टाइम अंडरस्कोर, 1 2 3 4 5, देन इनकी लेंथ 5 होगी, इनमें से 5 किसी की है, अमन, अमित, नहीं किसी की नहीं है, तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, नहीं आया कोई भी रिकॉर्ड। हाँ 4 थी, तो एक में अंडरस्कोर हटा रहा हूँ, 4 जिसकी होगी वो आ जाएंगे, लाइक अमित, अमन, रवि एंड श्याम। सो क्लियर, एज सिंपल एज दैट। लास्ट वन इज ए से स्टार्ट होना चाहिए एंड टी पे खत्म होना चाहिए, और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, तो ए से स्टार्ट होगा, इसके बीच में कुछ भी होगा, और टी से एंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ऐसा कुछ रिकॉर्ड अभी है नहीं है, लाइक तो अपन इसका लेते हैं, श्याम का लेते हैं, एस से स्टार्ट होना चाहिए और एम पे खत्म होना चाहिए, तो एस से स्टार्ट होगा एंड इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, और एम से एंड होना चाहिए। देखते हैं श्याम का रिकॉर्ड आता है, यस दिस इज श्याम, एस से स्टार्ट हो रहा है नाम और एम पे खत्म हो, this is very simple, and in this next video we will also discuss the advanced pattern matching. So there we use the regular expression. Okay, we will discuss about the advanced pattern matching, which is most important अगर आप डेटा एनालिटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और उस फील्ड में जाने की सोच रहे हो, तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन एसक्यूएल, बिकॉज जब भी आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस का इंटरव्यू फेस करोगे, सो मोस्ट प्रॉब्ली ये टॉपिक पूछा ही जाता है, तो मेक श्योर कि आप ये अच्छे से रिवाइज कर लें। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो ओके,
So this is advanced pattern matching question. So we will solve the advanced pattern matching question using the regular expression. So after ending this video, you will be able to solve any regular expression and you will be master in regular expression. So let's discuss about it. Find the employees whose name contain exactly 1A. So अगर अपन को ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसके नाम में ओनली एक ही ए हो कंटेन करे, देन हाउ कैन आई फाइंड दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड? तो इसके लिए अपन यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि अपन ने इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक पैटर्न मैचिंग क्वेश्चन वेयर वी हैव डिस्कस द परसेंटेज और अंडरस्कोर के बारे में डिस्कस किया था। सो उससे तो ये चीज सॉल्व नहीं होगी, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन से ये चीज बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो हियर इज अ सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नेम regular expression, where name के बाद regular expression, REGEXP regular expression, then we need to write the expression here. So here what indicate this expression here? So this is regular expression is designed to find the employees whose name contain exactly one name. Here is a step by step explanation of each part of regular expression. So this is called a negation. So negation, yes, caret भी कहते हैं. So this is what this is indicate. This is a being anchor, it assets that position to start the string. तो ये indicate करता है कि if we use the regular expression with any condition or name or anything, so अगर अपनी regular expression string से start हो रही, so we need to write here negation or you can say the caret. इसका ऑफिशियल नाम caret है, then we use the this. So ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके, सो ये इंडिकेट क्या करता है, स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आफ्टर दैट व्हाट इज दिस निगेशन ऑफ ए, ये कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है, ये इंडिकेट करता है दिस पार्ट कैन बी ब्रोकन डाउन एज अ फॉलोइंग एज। सो ये दो पार्ट में है, दिस वन एंड स्टार। सो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये निगेशन ऑफ ए दैट मीन्स कि ए के अलावा सब कुछ आ सकता है, बस ए नहीं आ सकता। वो भी कितनी बार, स्टार, स्टार मीन्स कितनी भी बार आ सकता है। अगर स्टार नहीं लगा होता तो एक ही बार आ सकता है, और स्टार लगाए मतलब 0 बार भी आ सकता है, एंड उसकी मल्टीपल बहुत सारे भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी, कितने भी हो सकते हैं ना। कि ए नहीं आना चाहिए, ए के अलावा कुछ भी आए, चाहे 0 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज दिस इज की ए होना चाहिए यहाँ पे, दिस वन एग्जैक्टली ए, क्योंकि अपन को चाहिए कि एग्जैक्ट एक ही ए हो, देन फॉलोइंग इज ए, या तो वो स्टार्टिंग में हो सकता है एंडिंग में हो सकता है। सो 1A, सो हियर similar we can earlier part of this match any sequence of character that does not contain a and it can be 0 and more occurrence. That means इसका मतलब ये है कि ए के अलावा, एक ए आ गया अपने बीच में, उसके बाद निगेशन ऑफ ए को छोड़ के और कोई भी कैरेक्टर कितनी बार भी आ सकता है। सो दिस इज, एंड डॉलर इंडिकेट करता है कि एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड हो रही है। जब भी आप स्ट्रिंग कंपेयर करें, यानी कैरेट आपके स्टार्टिंग में होगा एंड डॉलर आपके एंड में होगा, और देन आपके बीच में आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, जैसा कि यहाँ है कि नेगेशन ऑफ ए इंडिकेट करता है कि ए को छोड़कर कोई भी कैरेक्टर कितनी भी टाइम आ सकता है। इट कैन बी कम्स इन 0 टाइम्स और मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो। सेम यहाँ भी है, ए को छोड़कर और कितना भी कैरेक्टर आ सकता है, लेकिन हम ए एक बार ही आएगा। इट इज ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। So इसको let's execute in a ID. So it will clarify to you. So this is our table. This is our employees table. Inside this table, we have 5 column: ID, name, salary, department, hire date, and mobile number. Okay. So I want the record where name contains exactly 1A. So how can I do that? Just at the where. This is the conditional statement. Where name पे अपन को लगाना है, then column name, then regular expression, exp, and then inside the inverted single comma you need to you specify your expression. So सबसे पहले string start होनी चाहिए, then caret. After that we will follow the कि a को छोड़कर, so negation of a को छोड़ के कुछ भी आ जाए, कितनी टाइम, स्टार, यानी मल्टीपल टाइम्स। अगर आप यहाँ कुछ नहीं लगाते देन 1 टाइम ही होगा, देन स्टार। ओके, उसके बाद ए होना चाहिए कहीं पे भी, क्योंकि एग्जैक्टली 1 ए ही होना चाहिए। देन आफ्टर दैट यू कैन फिर नेगेशन ऑफ ए, उसके बाद नेगेशन ऑफ ए मतलब ए को छोड़कर कुछ भी कैरेक्टर कितनी बार आ सकता है, देन फॉलोइंग एस एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, दैट मींस डॉलर। ओके, सो दिस इज, एंड आफ्टर वी विल एग्जीक्यूट इट एंड यू कैन सी द रिजल्ट। एंड द रिकॉर्ड, ऐसे रिकॉर्ड आ गए हैं जिनके नाम में एग्जैक्टली 1 ए। अमित कंटेन्स ओनली 1 ए, Ravi contains only 1A, Ram contains only 1A, Syam contains only 1A. So as simple as that. Okay. Let's see the another one. So find the employees whose name start with A or N.
तो ए और एन के स्टार्ट होना चाहिए। सो अपन ने अभी किया था, से इसकी क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज बेयर बेयर नेम रेगुलर एक्सप्रेशन एंड सिंगल कोट्स में आपकी एक्सप्रेशन होगी। सो क्या होगा, स्टार्टिंग स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, दैट मीन्स कैरेट आएगा। उसके बाद उसके बाद इसमें आप लिख सकते हो कि या तो ए से स्टार्ट होना चाहिए, और दिस इज, और या एन से स्टार्ट होना चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर स्टार नहीं लगता है तो ओनली ए, वो क्या करता है, एक ही कैरेक्टर लेता है, दैट मीन्स कि स्टार्टिंग कैरेक्टर आपका ए या एन होना चाहिए। ओके, so this is, and what the last one, find the all employees whose mobile number is correct. So okay, this is most important, mobile number कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में। So select, let's change it color first so it looks good. So select star from employees their mobile number, mobile underscore number, this is our column name, and then regular expression or gxp, this is regular expression and this। अब जैसे अगर अपन लिखते हैं कि 0 से 9, तो मोबाइल नंबर ओनली कंटेन दिस कैरेक्टर्स, क्योंकि मोबाइल नंबर तो डिजिट ही होगा ना, तो 0 से 9 के बीच में ही कंटेन करना चाहिए। देन हियर यू कैन इंडिकेट द साइज ऑल्सो, लाइक 10 की साइज होना चाहिए, देन यू कैन इंडिकेट द साइज हियर ऑल्सो। सो एज सिंपल एज दैट। और अगर आप चाहते हैं कि अगर इंडिया में स्टार्टिंग 6 से फर्स्ट कैरेक्टर जो हो, फर्स्ट डिजिट हो, वो 6 से 9 के बीच में ही होता है, देन यू कैन इंडिकेट, यू कैन स्पेसिफाई द ईयर 6 से 9, फर्स्ट कैरेक्टर 6 से 9 एंड आफ्टर द दिस 9 कैरेक्टर 0 to 9 हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज सिंपल। सो लेट्स एग्जीक्यूट इन टेबल। So I want to perform the regular expression on my mobile number column, then mobile underscore number, and here we need to specify the regular expression, आर स्मॉल कैपिटल किसी में भी लिख सकते हो आप, देन सिंगल कोट्स के अंदर आपकी एक्सप्रेशन होनी चाहिए। देन अगर मैं इंडिकेट करूं 0 से 9, ओके, एड करूं 0 से 9, तो ये वाले आना चाहिए 0 से 9। लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो ये आ गए हैं पूरे मोबाइल नंबर। इफ आई स्पेसिफाई द फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे इसमें इसमें बस 9 है, बाकी सब में 1 2 जो कि नहीं है वैलिड, तो अपन यहाँ करके देखते हैं एक बार। 0 to 6 to 9 होना चाहिए फर्स्ट कैरेक्टर, एंड आफ्टर जो 9 कैरेक्टर्स हैं वो 0 से 9 कुछ भी हो सकते हैं। एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड यू कैन सी द रिजल्ट। 0 से 6 से 9 के बीच में पहला कैरेक्टर विच इज 9, गुड, एंड आफ्टर दैट 0 से 9 के बीच में 9 कैरेक्टर होनी चाहिए, विच इज फॉलो दिस। ओके, सो दिस इज सिंपल एंड आई होप कि आपको एडवांस पैटर्न मैचिंग समझ में आई होगी। एंड रेगुलर एक्सप्रेशन इज वेरी इजी। सो आप इसको, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन एक्सेस देयर एंड यू कैन रिवाइज देयर। We will talk about the how to print nth row in a table. Like sometimes interviewer directly ask you to like how to print third row or fourth row or nth row. कोई सी भी रो प्रिंट कराने के लिए बोल सकता है कि हाउ टू कैसे कराएंगे प्रिंट, तो इस देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। सो बिफोर अंडरस्टैंड टू हाउ टू प्रिंट द nth रो इन अ टेबल, so we need to understand the row number, रो नंबर कॉन्सेप्ट इन एसक्यूएल। तो ए रो नंबर माइस्क्यूएल में होता है, एक रो नंबर के ओरेकल में होता है, एंड अदर अदर रिलेशनल डेटाबेसेस में अलग अलग मेथड होते हैं। सो अपन माइस्क्यूएल का लेके चल रहे हैं। इन माइस्क्यूएल वी हैव अ रो नंबर मेथड, इट इज अ विंडो फंक्शन इन एसक्यूएल। So row number is a window function in SQL, and it is assign a unique sequential integer to rows with a partition of a result set starting from 1. तो it is a क्या करता है, एक sequential integer की एक कॉलम बनाता है विद इन अ रो, करस्पॉन्डिंग रो। इट इज अ pseudo कॉलम, ये मेमोरी में कुछ स्पेस नहीं लेता है। इट इज अ pseudo कॉलम, जस्ट रिकॉग्नाइज द या रो नंबर, और रो नंबर के लिए प्रोवाइड किया गया है MySQL द्वारा। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल। सो दिस इज माय एम्प्लॉयज टेबल एंड इनसाइड दिस टेबल आई हैव 5 column ID, name, salary, department and hire date. Okay, so if I want to print any nth row in a table, then how can I print? So there is a syntax, so you have to follow this. So select and star from, like you have सभी चीजें सिलेक्ट करनी है विच दिस इनसाइड दिस क्वेरी। तो पहले ए वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी एंड आफ्टर दैट दिस क्वेरी।
so we will talk about later. So select id name salary, तो select करना है id name and salary and row num. here we need to add the row num concept because by default तो नहीं होता, अगर अपन को जोड़ना है, अगर उसको मैनिपुलेट कुछ परफॉर्म करना है, we need to perform the row num. तो add row num method and this is over. Over means it is a clause which is used to, like if I want to perform the किस बेस पे आपको रो नंबर देना है, प्रोवाइड करना है, लाइक आईडी के बेस पे, नेम के बेस पे, सैलरी के बेस पे, डिपार्टमेंट के बेस पे या डेट के बेस पे. सो जस्ट टेक द आईडी के बेस पे मैंने लिया है. लाइक आप अगर आप चाहो तो यू कैन टेक ऑन द बेसिस ऑफ द सैलरी, यू कैन टेक द ओनली बेसिस ऑफ द नेम और डिपार्टमेंट और एटसेट्रा. सो मैंने यहाँ आईडी के बेस पे लिया है. रो नम ओवर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर बाय आईडी, ऑर्डर बाय आईडी एज रो नम. दिस इज एलियाजिंग. तो मैंने इस कॉलम का नाम रो नम रखा है एलियाजिंग की हुई. तो मैंने इस वाली टेबल से मुझे क्या क्या चाहिए, सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी एंड रो नंबर. मोस्ट इंपोर्टेंट ए रो नंबर, इट इज द स्यूडो कॉलम. एक और ऐड हो जाएगा कॉलम यहाँ पे, एक और ऐड कॉलम हो जाएगा जब रिजल्ट आएगा. आई विल सी इन वी विल एग्जीक्यूट इन आईडी आल्सो, सो इट विल क्लैरिफाई टू यू. सो ऑर्डर बाय आईडी एज रो नम फ्रॉम एम्प्लॉयज. एम्प्लॉय से आईडी नेम सैलरी एंड रो नम लाओ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड एज रो नम. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट. इस टेबल जो ये इनर क्वेरी है, इसकी एलियासिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अपन इनसाइड इस क्वेरी के अंदर एक कॉलम है रो नम, उस पे अपन को मैनिपुलेशन करना और कंडीशन लगानी है इस क्वेरी के बाहर. सो वी नीड टू एलियास दिस टेबल. सो अगर अपन को इस पे कोई परफॉर्म नहीं करना है, वी डोंट नीड टू एलियास दिस. बट अगर आपको इन किसी भी कॉलम पे मैनिपुलेट करना है, सो यू हैव टू क्लैरिफाई कि आप यहाँ पे एलियासिंग करो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. सो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं. सब क्वेरी सिलेक्ट एज नंबर्ड रो क्रिएट अ टेम्परेरी रिजल्ट सेट. ओके, सो ये टेम्परेरी रिजल्ट सेट क्रिएट कर देगा. दिस इज इनर क्वेरी. पहले तो ये क्वेरी फायर होगी तो ये आईडी नेम सैलरी एंड रो नंबर का कॉलम ऐड करेगी एंड एक रो नंबर नाम का टेबल बना देगी. दिस इज सिंपल टेम्परेरी रो नंबर. देन रो नंबर ऑर्डर बाय आईडी जनरेट द रो नंबर बेस्ड ऑन द आईडी कॉलम. तो आईडी कॉलम के बेस पे ये रो नंबर जो है वो आपको स्यूडो कॉलम प्रोवाइड कर देगा, लाइक 1 2 3 4 रो आईडी के हिसाब से. Then filter where row num is equal to n, retrieve the nth row from the result set. So this is simple. Okay, so let's execute an id so it will clarify to you. So this is our employees table and inside this table we have 6 columns: id, name, salary, department, hire date and mobile number. So we need to find the nth row. So select star from and inside this is inner query. Select, like I want ID, name, salary, सैलरी. अब इतना ही लेते हैं फिलहाल. देन रो नंबर, अपन को रो नंबर भी चाहिए. देन रो नंबर स्मॉल कैपिटल उसमें भी लिख सकते हो आप. रो नंबर ओवर ऑर्डर आईडी. ओवर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर बाय आईडी के बेस पे चाहिए. ओके, फ्रॉम need to mention the database name here. Employees. Okay, forget about to alias the table. So as row num. This is our column name. This is created by the SQL for using this row num concept. And aliasing, so we need to alias the table also. So just take the number table. बिकॉज अपन इस पे अभी पेयर कंडीशन लगाने वाले हैं इस वाले कॉलम पे, इस इनर क्वेरी. सो वी नीड टू एलियास दिस पेयर जो है कि रो नम, यस रो अंडरस्कोर नम कॉलम है इज इक्वल टू, चलो इफ आई वांट टू थर्ड रो चाहते हैं, देन एग्जीक्यूट इट एंड यू कैन सी द रिजल्ट द थर्ड रो व्हिच इज कमिंग. एंड आप देख सकते हो कि इसके साथ एक रो नम वाला कौन सा रो भी आ रहा है व्हिच इज दिस, ये सूडो कॉलम. ओके, सो दिस इज द एंड. अब इस पे एक क्वेश्चन और बनता है कि इंटरव्यूअर कभी भी पूछ लेता है कि लाइक इवन रोज पूरी प्रिंट कराओ. तो देन यू जस्ट नीड टू मैनिपुलेट हियर, लाइक इवन प्रिंट कराना है, देन मॉडुलो 2
if is equal to 0, then it is even, then it is even table, मतलब a even row है अगर इसके बराबर है तो, and then execute it, देखते हैं, and you can see the result 2 4, 2 4 and 6, this is row num and a even है, and if I want to odd, then you can do just not equal to use, and you can see the result, this is odd row. So this is all about the row number and parent nth row, any random row in a table. So this is important है इंटरव्यू के पर्पस से, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू डायरेक्टली पूछ सकता है. So this is all about. Will discuss about the difference between union and union or operator. So this is very basic question which is asked by the interviewer. What is the difference between union and union all? So these are the basic difference we will explain. I will explain in this video. So please keep watching this video at the end. Okay, so let's discuss about the union and union all operator. So union operator in SQL is used to combine to set of one and more select statement in a resulting table. Like if we have two tables, and if I want to concatenate these tables or concatenate these data of the table, so we can use the union operator. So the union operator remove duplicate from the command result from the set of select statement. Okay, so let's discuss about it. So this is the example. Like if I want to select the city from table 1 and union from another table which is table 2. So this is the some conditions that you have to follow if you use the union operator. So the condition for union statement that we column is the select statement need to be in the okay, so same number of column, so both the table contain the same number of column. अगर आपकी दोनों टेबल सेम नंबर ऑफ कॉलम कंटेन नहीं करती हैं, देन यू कैन नॉट यूज द यूनियन ऑपरेटर विद these tables. Okay, second is similar and compatible data type. Like अगर अपने पास दो टेबल है और उनकी जो कॉलम्स की डेटा टाइप है वो भी मैच होनी चाहिए, अगर वो मैच नहीं होती देन यू कैन नॉट परफॉर्म द यूनियन ऑपरेटर विद these tables. Okay, and third one is same logical operator. So this will we understand later, this is थोड़ी complex है, we will talk about later. So लॉजिकल ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, लाइक जैसे अगर सीक्वेंस और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए लाइक कॉलम्स का, लाइक अगर सिटी कॉलम फर्स्ट में पहली टेबल के एंड सेकंड कॉलम के भी फर्स्ट में ही होना चाहिए, दिस इज द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द टेबल. ओके, सो these are the my tables. Like if we have a table 1, this is my table 1 and this is my table 2, and the tables contain only two fields, city and country. So फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि सेम नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए, तो टू टू कॉलम है दोनों में. ओके, दिस इज गुड. एंड आफ्टर दैट कंपेटेबल डेटा टाइप भी सेम ही होना चाहिए, दोनों की बेरकेर अगर इसकी है तो इसकी भी बेरकेर ही होना चाहिए. ओके, then if I want to concatenate these tables or concatenate the data of these tables, so how can we use the union? So this is the syntax. So you have to select the city, मतलब जो कॉलम आप कंकेटिनेट करना चाहते हो, यू कैन यूज लाइक सिटी कॉलम फ्रॉम टेबल 1 एंड यूनियन select city country from table 2. Okay, and this is my resultant table. So this is my resultant table. Okay, so this is a note, this is most important. When you use union, it remove the duplicate record, while union all allow duplicate value while combining. Okay, so difference जो आता है कि यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस क्या है, तो यूनियन जो है वो आपका डेटा कंबाइन तो करता है बट इट डुप्लीकेट्स कंटेंट नहीं करता. लाइक सेम टेबल में अगर एक टेबल में लाइक इस टेबल में जैसे इंदौर और इंडिया नाम से रिकॉर्ड है एंड इस टेबल में भी है, तो इस दो बार नहीं शो करेगा, इट्स ओनली वन टाइम्स. लाइक देखो इस टेबल में आप देख सकते हो इट्स ओनली शो द वन टाइम. सो इंदौर इंडिया का केवल एक ही रिकॉर्ड आएगा, सो इस डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है. और अगर यूनियन ऑल अगर अपन यूज करेंगे देन इट्स डुप्लीकेट अलाउ करता है. तो यहाँ आप देखोगे इंदौर एंड इंडिया की दो दो एंट्रीज है, बिकॉज अपनी टेबल में यहाँ भी इंदौर इंडिया था एक रिकॉर्ड और यहाँ भी था. सो दिस इज द डिफरेंस. मेन डिफरेंस क्या था कि यूनियन में डुप्लीकेट रिमूव हो जाता है लेकिन यूनियन ऑल में डुप्लीकेट रिमूव नहीं होता. सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल. Okay, so we have two tables in my isme. So this is info one table which have two record Bhopal India and Indore India. Okay, and if this is my second table info two, and this is my second table info two, and we have a four record London UK, California USA, and Indore India and Indore India. मतलब ये duplicates है, that means कि contain करता है कि नहीं check करने के लिए. Okay, so if I want to combine these tables, so how can I do that? So just select star from, so we need to, I will select the first
particular column. Then city and country, city and country. Okay, city and country, and then union, and then we need to select city, country from country from skill.info first. Okay, and let's execute it. And what's wrong with this? This is so if we execute this union operator, so you can see the result that there is डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव हो गए बिकॉज वी हैव थ्री रिकॉर्ड्स. अगर अपन दोनों टेबल्स में देखें कि एक रिकॉर्ड इंटो वन में था और दो रिकॉर्ड इंदौर इंडिया के नाम से इसमें थे सेकंड टेबल में, देन यू कैन सी द रिजल्ट बिकॉज वी यूज द यूनियन ऑपरेटर. सो इसने डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया है. और अगर यहाँ यूनियन की जगह यूनियन ऑल अगर अपन यूज करेंगे देन इट विल नॉट रिमूव द डुप्लीकेट रिकॉर्ड. देखो ए इंडिया इंडिया इंदौर इंदौर इंडिया इंदौर इंडिया, दीज आर द कोड रिकॉर्ड. तो ये डुप्लीकेट को रिमूव नहीं करता. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. यही डिफरेंस है और इंटरव्यू में पूछा भी जाता है. सो अच्छा है कि आप एक बार रिवाइज करके जाए. ओके, थैंक यू. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट. सो join, what is join? So join is a SQL are operational use operations. So join is a operations that is used to combine the row from two or more tables based on some related column between them. Like we have a if we want to combine a two three tables uh, based on some common column, we can use the join. So what is the key point? So सबसे पहले पर्पस देख लेते हैं. व्हाट इज द पर्पस? तो पर्पस क्या है मीनिंग का? सो रिट्रीव द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स. लाइक इफ वी अपन अगर किसी टेबल से डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं मल्टीपल टेबल से बेस्ड, अगर उनके बीच में कोई सेम कॉलम है देन उसके बेसिस पे अगर अपन कुछ डेटा लेना चाहते हैं मल्टीपल टेबल से देन वी यूज द जॉइंस. ओके, तो अगर अपन किसी दो टेबल्स को कंबाइन करना चाहते हैं और उसके बेस पे डेटा लाना चाहते हैं तो उन दोनों के बीच में कॉमन कॉलम होना ही चाहिए. अगर उस नहीं होगा देन वी कैन नॉट यूज द जॉइन देयर. सो कुछ टाइप होते हैं जॉइन के, लाइक जैसे इनर जॉइन, left join, right join, full outer join, cross join, self join. And these join are used for different purpose. So let's understand the inner join. So inner join क्या होता है? Inner join is combine record from tables या two tables or more than two tables whenever there are matching values in the field column in both the table. इसका मतलब क्या है? Like we have अगर वो दो tables हैं और उनके बीच में कोई सेम कॉलम अगर टेबल वन में सेम कॉलम है एंड सेम कॉलम टेबल टू में भी है तो उसके बेस पे जो उनके बीच में कॉमन वैल्यूज होंगी उनके बेस पे जो डेटा रिट्रीव करते हैं उसे दिस इज कॉल्ड इनर जॉइन. सो बेस्ड ऑन द इक्वालिटी कंडीशन, बेस्ड ऑन द इक्वालिटी कंडीशन ऑफ द सिमिलर जो कॉलम है उसकी इक्वालिटी कंडीशन के बेस पे वो डेटा रिट्रीव करते हैं. दिस इज कॉल्ड द इनर जॉइन. सो वी मस्ट हैव द कॉमन कॉलम. मैंने बार बार कह रहा हूँ कि अगर जॉइन अपन परफॉर्म कर रहे हैं देन अगर डिफरेंट टेबल्स के बीच में अगर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं देन उन टेबल्स के बीच में कॉमन कॉलम जरूर होना चाहिए. ओके, let's see the example. So display the employee ID, employee name and department name. Okay, in the तीनों field दिखाना है using the inner join. Okay, we have two tables or like if we one table is employee table EMP and second table is DEPT department table. Okay, so inside the EMP table we have three columns: employee ID, employee name and department ID. And inside the department table we have a two column department ID and department name. तो अगर अपन को शो कराना है कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम एंड दिस इज द कॉमन कॉलम. मैंने बोला था अगर ज्वाइन परफॉर्म करते हैं तो कॉमन कॉलम होना ही चाहिए. तो डिपार्टमेंट आईडी इज अ कॉमन कॉलम इन बोथ द टेबल्स. इसमें भी डिपार्टमेंट आईडी है एंड इसमें भी डिपार्टमेंट आईडी है. एंड इस डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे अपन को इसका जो डिपार्टमेंट नेम है ना इसको एक्सेस करना है. सो देन हाउ कैन, तो रिजल्टेड टेबल अपना कुछ ऐसा आना चाहिए लाइक अगर ईएमपी आईडी वन अमन ह्यूमन रिसोर्स, लाइक इसका डिपार्टमेंट नंबर अगर आप देखें देन 101 और 101 का यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है ह्यूमन रिसोर्स. सो दिस इज समथिंग आई वांट, है ना. सो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है इंटरव्यू में कि जॉइंस इनर जॉइंस की समथिंग विच कैन रिलेटेड. So I want to access the data between the different tables based on some condition of the same columns condition. So
This is most important. So select, तो इसकी क्वेरी दो तरीके से आप लिख सकते हो. So first is select EMP ID like EMP table, then EMP ID, EMP name and DEPT. ये डिपार्टमेंट टेबल का नाम है, DEPT डॉट डिपार्टमेंट नेम, बिकॉज अपन इस वाली टेबल से डेटा लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी नीड टू यूज द DEPT डॉट DEPT, मतलब टेबल का नाम फिर डॉट और कॉलम का नाम. फ्रॉम EMP मतलब इस वाली टेबल से ए वाला डेटा, कॉमा DEPT डिपार्टमेंट टेबल से ए वाला डेटा. वेयर कंडीशन अब आई, लाइक जहां EMP लाइक एम्प्लॉय जो टेबल है उसकी डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी जब सेम हो, देन वी कैन गिव द डेटा. सो बेस्ड ऑन द दिस कंडीशन I want to retrieve the data. So and the second one is we can use the inner join. Directly we can use the inner join. So select EMP ID, EMP name, department name from employee EMP मतलब EMP से चाहिए, and inner join DEPT पे अपन ने लगा दिए department join, and it's automatically catch and retrieve the data based on this condition. And we can use the this on is a clause. This is a conditional clause. We can use in join. So ये मत भूलना लगाना. Then EMP department ID and department की department ID जब same हो. So let's see the practical. Let's do the practical. So we have two tables. First is this is EMP table. Inside this ID, name, salary and department ID. And second one is department DEPT table. This is my DEPT table. Okay. So this is department ID and department name. इसके inside इसके है column का नाम. So I want to retrieve the data both the. So अगर अपन देखें तो यहाँ डिपार्टमेंट आईडी 101 अमन, 102, 103, 104 है, 105, 106 तक है. पर अगर अपन डिपार्टमेंट में देखें, देन अगर अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ 106 है ही नहीं, 104 भी नहीं है. यहाँ 101, 102, 103 एंड 105. तो इसी के लिए इनर जॉइन है कि जो कॉमन डेटा होगा उसी के लिए आएगा. सो लेट्स एग्जीक्यूट इट. सो सेलेक्ट EMP underscore ID. This is EMP ID. EMP underscore name. This is employee का name and DEPT dot department underscore name from EMP. In this MySQL, we need to mention the database name also. So scalar dot EMP. Okay, and comma scalar dot DEPT department also, where this is the common condition which on the basis of this condition I want the data. So EMP dot DEPT underscore ID is equal to DEPT dot DEPT underscore ID. So let's execute it and you can see the result. So there is a data which is 1, 2, 3, 4 because Aman, Amit, Anupam and Ram का ही डेटा आया है because, और बाकी क्यों नहीं आया, because वहां पे डिपार्टमेंट नेम था ही नहीं, उनके पास डिपार्टमेंट का आईडी थी ही नहीं. That is why. So this I want to use directly inner join, so it will also work. So if I want to use like if I want to use here directly inner join B, we can use it like department name, department. We don't need to mention the here the table name. We just send the okay. So if we here अगर अपन यहाँ पे inner join लगा सकते हैं, then inner join. So this is inner join. यहाँ पे लगा सकते हैं and that's executed and you can see the result. The same result will be is it coming. Okay. So this is simple. ये बहुत simple है. वेरी इजी. तो इनर जॉइन क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ द सेम कॉलम, इट्स सेम कॉलम के बेस पे ओनली द डेटा लाता है जो मिल रहा है, डेटा सेम है, अदरवाइज नहीं लाएगा. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द लेफ्ट जॉइन. सो व्हाट इज लेफ्ट जॉइन? सो लेफ्ट जॉइन रिटर्न all record from the table EMP, that means it is a example table, and the matches record from the department table. Like if we have a two tables EMP and department table, and
if we use the left join to join in these two tables, so डेटा कहाँ से आएगा, मैचेस डेटा आएगा. इफ देयर इज नो मैचेस देन रिजल्ट विल बी नल राइट साइड. ओके, सो ये क्या कह रहा है कि दो टेबल है, ईएमपी एंड डिपार्टमेंट टेबल. अगर अपन लेफ्ट ज्वाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम, इन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर अपन ज्वाइन किसी चीज पे परफॉर्म करते हैं देन वहां पे एक कॉमन अपने पास कॉलम होना ही चाहिए, लाइक डीपीटी आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, इन दोनों में कॉमन है. सो लेफ्ट ज्वाइन में ये होता है कि लेफ्ट साइड मतलब जो पहली टेबल है दिस इज एम्प्लॉय टेबल. सो इसका डेटा तो आएगा ही, जिस जो लेफ्ट ज्वाइन जिस पे लगा रहा है तो उसका डेटा तो आएगा ही आएगा, उसका तो पूरा डेटा आएगा. और इसके करस्पॉन्डिंग लाइक डिपार्टमेंट अगर लाइक 105 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ए रिकॉर्ड आएगा, इसकी आईडी भी आएगी, इसका नाम भी आएगा, इसकी आईडी भी डिपार्टमेंट, पर इसके डिपार्टमेंट का नाम नल आएगा क्योंकि यहाँ पे 105 नाम का है नहीं. इनर जॉइन में क्या था, जो मैचेस होगा वही आएगा, इसमें क्या होगा, जो मैचेस होगा वो आएगा और लेफ्ट साइड का हमेशा आएगा ही आएगा, लेफ्ट वाली टेबल आएगी आएगी. तो अपन मान के चल रहे हैं कि ईएमपी लेफ्ट टेबल है. ओके, सो दिस इज माय रिजल्टेंट टेबल. लाइक इसमें लेफ्ट के पूरे रिकॉर्ड आएंगे, लेफ्ट के 105 106 103, लेफ्ट मींस ये पूरे आएंगे. लेकिन एक बात ध्यान रखना, 110 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये राइट वाली टेबल है डिपार्टमेंट. और लेफ्ट जॉइन में केवल लेफ्ट वाली पूरी टेबल आती है और जो कॉमन डेटा के हिसाब से डेटा आता है वो भी आएगा. तो लाइक ये कॉमन डेटा के हिसाब से ये आया एंड लेफ्ट वाले डेटा में लेफ्ट वाला डेटा भी आया. अगर इसका मतलब इसमें डिपार्टमेंट आईडी नहीं थी, डिपार्टमेंट नेम नहीं था, तो नल आया. तो लेट्स सी द एग्जांपल. सो इसका सिंटेक्स क्या होता है, अपन को जो सिलेक्ट करना है वो कॉलम, लाइक लास्ट वीडियो में मैंने देखा था, अपन ने देखा था. तो EMP ID, EMP name, department name from EMP. This is my left table and this is my right table. बीच में जो left join लगा हुआ है this is clause, left join का clause है. And on the basis of this condition, जहाँ department ID, employee की department ID and department की department ID same हो. So let's execute an ID, so it will more clarify to you. Good. Okay, so this is my employees table and this is my department table. Okay, department ID, department name and inside employee table है ID, name and department ID. तो ये same column है. Okay, now let's execute query. So I want the emp.id, emp.name and I want also the department name. So dept or department name, dept underscore name from in mysql database. We need to inform the data, mention the database name also, and emp table from emp and I want perform the left join, then we need to use the left join. This is left join clause, तो ये left join कर देगा dot dept. So this is department table. Okay, on some condition like emp.id dept underscore id is equal to department dept की department id dot dept underscore id. So let's execute it and you can see the result. Like we have जिसकी department id दूसरी टेबल में थी तो उसका डिपार्टमेंट का नाम आया है. तो जिसकी नहीं मिली, नहीं आईडी नहीं थी, उसका नाम डिपार्टमेंट नहीं था, वो नल आया. लेकिन इनर जॉइन में क्या होता था, इनर जॉइन में ये नल वाला नहीं आता था, जो मैच करेगा वही आता है. लेकिन लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट जॉइन का पूरा डेटा, लेफ्ट वाली टेबल का पूरा डेटा आएगा और जो मैच करेगा वो डेटा आएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेफ्ट जॉइन, वेरी सिंपल. ओके, so let's discuss about it. So right join, what is right join? Right join return all record from right table. Right table मान के चलो डिपार्टमेंट टेबल है and the matches record from left table. तो लेफ्ट टेबल की मैचेस रिकॉर्ड तो देता ही देती है और राइट टेबल के पूरे रिकॉर्ड देती है. इफ देयर इज नो मैचेस देन रिजल्टेंट इज नल ऑफ द लेफ्ट साइड. लाइक अगर कोई भी मैच नहीं करता है देन इट विल गिव द नल वैल्यू. So let's see the example. So inside the my emp table like emp id, emp name and department id है and in this department id and department name है. तो लास्ट वीडियो अपन ने देखा था कि लेफ्ट जॉइन में क्या होता था, तो लेफ्ट जॉइन में
लेफ्ट वाली टेबल का पूरा डेटा आता था और जो डेटा मैच होता था वो भी पूरा आता था। पर राइट जॉइन में क्या होता है कि जो डेटा मैच होता है वो तो आता ही है और राइट टेबल का पूरा डेटा आता है। ये अपन लेफ्ट जॉइन में देख रहे थे, ए वाला डेटा स्किप हो जा रहा था क्योंकि वो लेफ्ट जॉइन था, तो वो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आने की। पर राइट जॉइन में क्या होता है, राइट टेबल जो सेकंड वाली टेबल होती है उसका पूरा डेटा आता है, और जो चीज मैच नहीं करती है इस टेबल की, मतलब जैसे सेल्स वाली टेबल की मैच नहीं करेगी, देन उसका ईएमपी नेम और ईएमपी आईडी नल आएगी। ओके, this is my redundant table. So you can see, I think there is some mistake. 1012. Okay, so there is something wrong. Null, null, and this is cells. This is cells. तो redundant table क्या आएगी, क्योंकि ये राइट जॉइन है, तो इसके सेल्स वाला इसमें तो है नहीं 1010 की रिकॉर्ड, तो वो वाला डेटा इसमें नल आएगा लेफ्ट वाला, और राइट वाला तो अपना आएगा ही आएगा क्योंकि अपन डिपार्टमेंट नेम ही प्रिंट कर रहा है। लेट्स सी द क्वेरी। सो दिस इज द सिंटैक्स, ये आपके कॉलम्स के नेम फ्रॉम ईएमपी, दिस इज माय लेफ्ट टेबल एंड दिस इज माय राइट टेबल, एंड राइट जॉइन बीच में लगाते हैं। ओके, सेम एज लेफ्ट जॉइन एंड नल जॉइन की तरह ही है, एंड दिस इज द कंडीशन, ये सेम ही रहती है कि इस कंडीशन के बेस पे अपन को डेटा लाना है। तो डेटा कॉलम तो सेम नहीं, ये तो होना ही चाहिए कॉलम, दिस विल बी सेम। लेट्स एग्जीक्यूट इन आईडी टेबल। ओके, सो दिस इज emp table, and inside this table id, name and department id. This is my second table, department table, and department id and department name है। so I want कि राइट जॉइन अपन को परफॉर्म करना है, तो क्या कर सकते हैं, लाइक emp डॉट id अपन को चाहिए, emp डॉट नेम अपन को चाहिए, एंड डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो DEPT डिपार्टमेंट टेबल का नाम है, कॉलम डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम, in this mysql database we need to mention the database name dot emp and right join, this is right, this is important, ये अपन राइट जॉइन लगा रहे हैं, तो राइट वाली टेबल का पूरा डेटा आएगा और जो मैच होगा डेटा वो भी आएगा, और जो राइट वाली टेबल से जो मैच डेटा नहीं होगा वो नल वैल्यू आएगी। सो dpt ऑन, कंडीशन क्या होगी कि emp की डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू होनी चाहिए डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट इट, दिस इज क्वेरी, लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड यू कैन सी द रिजल्ट। देख सकते हैं कि जो कॉमन डेटा था इन सब का रिकॉर्ड तो था ही अपने पास, एंड अपन के पास ये जो डॉक्टर वाला फील्ड थी, डिपार्टमेंट नेम था 110, लाइक यू कैन सी हियर, तो ये वाला डेटा नहीं आया, इसका लेफ्ट वाला में कोई था नहीं तो नल आया, राइट जॉइन है, तो राइट वाली टेबल का पूरा डेटा आएगा, लेफ्ट वाले का जो मैच नहीं होगा वो नल आएगा, जो मैच होगा वो वेस्टेज डेटा आएगा। सो दिस इज राइट जॉइन इज ऑल्सो सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट राइट जॉइन। We will discuss about the full outer join. So this will full outer join return record when there is a matches either left, like a left will be a emp table in my case, and right will be a department table. It can be anything, any table, so don't worry about, and it return the null if the non matching row and either on side, like अगर डेटा कोई मैच नहीं करता तो लेफ्ट राइट रीजन में क्या होता था कि लेफ्ट वाली टेबल का पूरा डेटा आता था, और जो मैच होता था वो आता था, और जो मैच नहीं होता था लेफ्ट वाली टेबल से वो नल आता था। तो एंड राइट आउटर जोन में क्या होता था, राइट जोन में ये होता था कि राइट वाइट टेबल का पूरा डेटा आता था और जो मैचेस देता था वो भी आता था, और जो मैच नहीं होता था राइट टेबल से वो नल आता था। तो फुल आउटर जोन में क्या होता है कि ये राइट वाली टेबल का ही पूरा डेटा आएगा, लेफ्ट वाली टेबल का ही पूरा डेटा आएगा, और जो डेटा मैच नहीं होगा वो नल आएगा। सो लेट्स सी द एग्जांपल। सो दिस इज माय emp table and this is my department table. So inside the emp table we have three fields, emp id, emp name and department id. Inside the department table we have two fields, department id and department name. So अपन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 105 एंड 106 डिपार्टमेंट आईडी है, पर यहाँ पे 106 एंड 105 नहीं है, और यहाँ पे 1010 है पर यहाँ पे 1010 नहीं है, तो अपन को पूरा डेटा मिलेगा। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता था, ये पूरा मिलता था,
और उसके बेस पे जो कॉमन वैल्यू थी वो भी मिलती थी। राइट आउटर जॉइन में क्या होता था, ये पूरा डेटा मिलता था और जो इसके बेस पे कॉमन वैल्यू थी वो भी मिलती थी, जो मैच नहीं होती थी वो नल आती थी। पर राइट आउटर फुल आउटर जॉइन में क्या होता है, टोटल वैल्यू आएगी, पूरा आएगा एंड नल के साथ। देख सकते हैं आप, यू कैन सी द रिजल्ट एंड टेबल। लाइक अगर ए 6 और 5 में, 5 एंड 6 में इनकी 106 और 105 का डिपार्टमेंट नाम कुछ है ही नहीं, तो यहाँ क्या है, नल आया है। एंड इसी प्रकार अगर अपन देखें सेल्स 110 का कोई एम्प्लॉय नाम है ही नहीं, एम्प्लॉय आईडी भी नहीं है, तो उसका नल आना चाहिए। एंड यू कैन सी द रिजल्ट कि नल आया। सो लेट डिस्कस अबाउट द क्वेरी। सो सिंटेक्स सेम है, बस लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, इनर जॉइन की जगह फुल आउटर जॉइन हो जाएगा। एंड दिस इज माय लेफ्ट टेबल, दिस इज माय लेफ्ट टेबल एंड दिस इज माय राइट टेबल। एंड फील्ड सेम ही अपन ले रहे हैं एंड बेसिस ऑन दिस कंडीशन की डिपार्टमेंट आईडी सेम होनी चाहिए। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट इन अ टेबल। So this is my employees table and this is my department table. Okay. So what we need to do, we need to write the query for full outer join. So I need to select the emp dot id, emp id, no id, emp dot name and department से अपन को चाहिए dpt dot department name, dpt underscore name. From here we need to mention the database name because this is mysql. So emp table and full outer join, this is full outer join, and again dpt table, this is outer join, this is full outer join. Document id on basis some condition. What is the condition? emp dot department id is equal to dpt dot dpt underscore id. Let's execute it. So इसमें यही है कि सभी में फुल आउटर जॉइन सपोर्ट नहीं करता है, सभी रिलेशनल डेटाबेसेस में फुल आउटर जॉइन सपोर्ट नहीं करता है, खासकर माईएसक्यूएल में नहीं करता। तो यही बताना चाहता था कि माईएसक्यूएल में ये फुल आउटर जॉइन सपोर्ट नहीं करता है, तो इसकी जगह अपन को यूनियन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द यूनियन इन यूनियन ऑफ, सो वहां पे अपन यूनियन यूज कर सकते हैं। तो दो टेबल को मर्ज करने के लिए सेम काम वर्क दोनों ही करते हैं। ओके, सो मैं यही बताना चाहता था कि फुल आउटर जॉइन माईएसक्यूएल में वर्क नहीं करता है। ओके, सो ये रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो एंड आप अगर बोल रहे हो तो वहां फुल आउटर जॉइन वर्क नहीं करता माईएसक्यूएल। ओके ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फुल आउटर जॉइन। तो आप माईएसक्यूएल में फुल आउटर जॉइन की जगह यूनियन यूज कर सकते हो। We have discussed about the self join. So what is self join? We have already discussed the inner join, left join, right join and full outer join. In this video we will discuss about the self join. So let's discuss about it. Self join is a regular join, irregular joining होता है, but the table is joined with itself. Like दो टेबल, एक ही टेबल है and इस अपनी टेबल की खुद के साथ एक उस ऑपरेशन परफॉर्म करती है, इस कॉल्ड सेल्फ जॉइन। मतलब एक ही टेबल दो टाइम्स जुड़ती है। So we will see the example, so it will clarify to you. So this is useful for hierarchical data. Okay, let's see the example. So this is my employee table. Inside this table we have a 4 column like employee id, employee name, department id and manager id. So here you can see the employee id 1 has a manager id null, मतलब employee 1 का कोई manager नहीं है। But if we see the employee 2, employee id अमन and you will see the manager id 1, मतलब अमन का जो है मैनेजर कौन है, दिस इज 1 अजय, अजय मैनेजर है अमन का। एंड सेम इज रवि की जो मैनेजर आईडी है क्या है 1, मतलब रवि का भी मैनेजर कौन हुआ, दिस वाला ए वाला अजय। एंड सेम इज और भी है, यू कैन सी एंड एक्सप्लोर इट। एंड दिस इज वेरी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन, लेट्स परफॉर्म द सेल्फ जॉइन सो एम्प्लॉय एंड देयर मैनेजर। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, बहुत बार पूछा गया है। सो सेल्फ जॉइन की एम्प्लॉय बताओ और उसके मैनेजर्स बताओ कि किसका कौन मैनेजर है। लाइक अमन का मैनेजर अगर अजय है, कैसे क्वेरी क्या होगी इसके लिए। सो लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ द क्वेरी।
So see the like even dot employee name, first we need to employee name चाहिए as employee, इसको एलियास करके एम्प्लॉय कर दिया। लाइक एक ही आप देख सकते हो कि सेल्फ ज्वाइन मतलब कि एक ही टेबल है पर उसको एलियास करके दो बार लिखा गया है, E1 एंड E2, एंड उसको उस पे मैनिपुलेशन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ जॉइन, नथिंग एल्स। सो ईएमपी नेम, इसमें भी से भी ईएमपी नेम चाहिए, एज अ मैनेजर चाहिए। ओके, अगर अपन ये रेगुलर ज्वाइन ही होता है लेफ्ट ज्वाइन, इसमें लेफ्ट ज्वाइन ही लगता है, सेल्फ ज्वाइन में आपको कोई क्लॉज होता नहीं, इसमें सेल्फ लेफ्ट ज्वाइन ही लगता है बस। इसके जो करने का तरीका है, दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ ज्वाइन, नथिंग एल्स। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो एक बार ध्यान रखना कि सेल्फ ज्वाइन नॉर्मल ज्वाइन यूज करते हैं अपन, बट उसको सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं, है ना, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन कि A1 की ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज की मैनेजर जो आईडी है वो एम्प्लॉयज E2, दिस इज मैनेजर की आईडी से अगर बराबर है, देन गिव द रिकॉर्ड, एंड दिस इज माय रिजल्टेंट टेबल। यू कैन सी द रिजल्ट। अजय का कोई मैनेजर था नहीं, वो नहीं आया। अमन का अजय था, रवि का भी अजय था, रितेश का अमन था, हर्ष का अमन था, एंड अमित का रवि था। दिस इज ऑल अबाउट। एंड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि E1 एंड E2, यहाँ आप देख रहे हैं ना, E1 एंड E2, दिस वन, ये रेफरेंस बनाए हुए हैं टेबल के, सेम टेबल है बट दो रेफरेंस बनाए हुए। E1 एंड E2 आर अलायंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल से अलायंस की गई, मतलब दो रेफरेंस बनाए हैं सेम टेबल के। एंड ठीक है, एंड लेफ्ट ज्वाइन इंश्योर की, लेफ्ट ज्वाइन क्या इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज पूरे होने चाहिए। अपन ने देखा था ना लास्ट वीडियो में कि लेफ्ट ज्वाइन कैसे परफॉर्म करता है, अगर आपने नहीं देखी आप जाके देख सकते हो वीडियो। सो लेफ्ट ज्वाइन की इंश्योर क्या करता है कि लेफ्ट वाले पूरे रिकॉर्ड है, मतलब एम्प्लॉयज पूरे आने चाहिए। अगर उसके मैनेजर कोई नहीं है, देन इट विल गिव द नल वैल्यू। सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट ज्वाइन। डोंट हैव मैनेजर, देन मैनेजर आईडी इज नल। सो on E1 dot manager ID is equal to E2 dot ID. This is E2 dot employee ID. There is a mistake. EMP underscore ID. Clause match employees with their manager by comparing the manager ID. ये manager ID को देख के बता रहा है कि कौन किसका manager है. So this is simple self join. Let's see the example. So this is my employee table. Inside this table you can see there are three column, ID, name and manager ID. So I want कि हर एम्प्लॉय का नाम आए और उसके मैनेजर का नाम आए, उसके करस्पॉन्डिंग कौन उसका मैनेजर है। सो हियर वी नीड टू परफॉर्म द सेल्फ ज्वाइन। सो सेल्फ ज्वाइन इज नथिंग बट नॉर्मल ज्वाइन होता है, बस उसको सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। सो यू कैन सी हियर व्हाट इज, फर्स्ट वी नीड टू टेक द रेफरेंसेस, लाइक E1 का रेफरेंस से दोनों की नेम लेना है। सो सिलेक्ट E1 डॉट, E1 बना लेते हैं एम्प्लॉयज की, देन EMP अंडरस्कोर नेम, नेम चाहिए ना, तो E1 डॉट नेम फ्रॉम EMP डॉट नेम एस एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज एंड E2 dot name as manager. Okay, from EMP, here we need to mention the database name because it's a mysql. EMP E1, EMP E1 and left join. This is मोस्ट इंपोर्टेंट कि एम्प्लॉय तो चाहिए चाहिए, दिस इज लेफ्ट टेबल एम्प्लॉय हो गई, तो एम्प्लॉय के नेम तो चाहिए चाहिए, जिसका मैनेजर नहीं है वो नल आएगा, पर ये लेफ्ट तो पूरे आने चाहिए। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट जॉइन। डॉट EMP डॉट E2, दिस इज दूसरी टेबल लेफ्ट राइट जॉइन हो गई है ना। ऑन, ऑन ये कंडीशन होगी, तो E1 डॉट मैनेजर आईडी, दिस इज कॉल्ड मैनेजर आईडी अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू होना चाहिए E2 डॉट के आईडी के। लाइक यू कैन सी हियर E1 की मैनेजर आईडी एम्प्लॉय की आईडी से मैच होनी चाहिए, तो अपने केस में एम्प्लॉय आईडी नहीं है, आईडी है। एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड लेट्स सी व्हाट विल। सो यू कैन सी द रिजल्ट। आप मैनेजर आ गए हैं, लाइक अमन का मैनेजर कोई नहीं था, पर अमित का मैनेजर अमन है, अनुपम का मैनेजर अमन है, रवि का मैनेजर अमित है, राम का मैनेजर अनुपम। ओके, श्याम का मैनेजर भी अनुपम है। सो दिस इज सिंपल, this is simple. So this is all about the self join. This is very simple. Okay.
we will discuss the most important topic of the DBMS or SQL is asset property. Like when you develop any software or application related to a transaction, it is mainly used for transactional management. ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट बेसिकली की जो फोन पे और पेटीएम में यूज होते हैं, लाइक जब अपन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इंटरनली ये एसेट प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की जाती हैं उनको रिलायबल करने के लिए, ट्रांजेक्शन को रिलायबल करने के लिए। लाइक आप देखते हो कि कभी आपका ट्रांजेक्शन फंसता नहीं है, लाइक कभी ऐसे पैसे कट जाते हैं पर आते नहीं है, लाइक ये सब चीजें होती हैं। तो इसके इसके बैकएंड में एसेट प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की जाती हैं ताकि ये ट्रांजेक्शंस बिल्कुल रिलायबल। So let's understand about it. Okay. So asset properties are a set of principles that ensure reliable transaction. Like ये ensure करता है कि अगर asset properties आपने implement की है तो reliable transaction ही होगा। In database management system and database में they stand for like asset properties का full form atomicity, consistency, isolation, and D means durability. Okay. So this is all about the full forms. Let's understand one by one. So first is atomicity. So what is atomicity? So atomicity का means क्या होता है? Atomicity ensure that a transaction is treated as a single indivisible unit. Like इसमें क्या होता है एटोमिसिटी में कि ट्रांजेक्शन या तो पूरा कंप्लीट होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर ट्रांजेक्शन 90% कंप्लीट हो गया और 10% रह गया है तो वो रिज्यूम होगा। इसमें रिज्यूम का ऑप्शन नहीं होता, ये डायरेक्ट रोल बैक होता है, डायरेक्ट फिर स्टार्ट होता है। तो या तो पूरा ट्रांजेक्शन होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके। तो 90% अगर हुआ है, 10% नहीं हुआ है, तो वो 90% वाला कैंसिल होकर दोबारा पूरा होगा। इसमें रिज्यूम का ऑप्शन नहीं होता, या तो पूरा ट्रांजेक्शन होगा या कुछ भी नहीं होगा। मीनिंग आइदर ऑल इट्स ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटेड और नन। यही मैं समझा रहा था कि या तो पूरे ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे या फिर कोई सा भी नहीं होगा। ओके। एन एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, दिस इज एग्जाम्पल। सो इन अ बैंक ट्रांसफर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट ऑपरेशंस मस्ट बी कंप्लीटेड। लाइक जब अपन फोन पे या किसी भी थर्ड पार्टी के यूज करके जब अपन पेमेंट करते हैं, देन अगर अपने डेबिट हुए अकाउंट से पैसे एंड क्रेडिट ऑपरेशन सामने वाले जिसको अपन भेज रहे हैं तो मस्ट बी कंप्लीटेड, दोनों कंप्लीट होना चाहिए। अगर एक फेल होता है देन इंटायर ट्रांजेक्शन विल बी रोल बैक। तो आप देखते हो कि जब अपन पैसे ट्रांसफर करते समय या तो पिन गलत डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो रोल बैक हो जाता है, इंटायरली रोल बैक हो जाता है। वो बीच में रिज्यूम नहीं होता कि दोबारा आप पिन डाल दो, ऐसा कुछ मतलब दोबारा से आपको पैसे डाल के सब कुछ करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द एटोमिसिटी। एंड सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी। सो योर डेटाबेस शुड बी कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जो ट्रांजेक्शन जो होते हैं, ट्रांजेक्शन मीन्स द डेटा बेसिस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर स्टेट। इसका मतलब ये है कि बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड द सम ऑफ मनी विल बी सेम। लाइक अगर मैं एक पर्सन है T1 ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन T2 है, इसके पास 2,000 रुपए एंड T2 के पास 3,000 रुपए। तो अगर मैं 2,000, इनके सम कितना है 2,000 प्लस 3,000 5,000। तो बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड द सम ऑफ मनी शुड बी सेम। तो अभी इसके में ट्रांजेक्शन T1 के में 2,000 है एंड ट्रांजेक्शन T2 के में 2,000 3,000 है। तो सूट कितना हो गया 5,000। तो 5,000 है। अगर अब मैं ट्रांजेक्शन T1 से 2,000 सेंड करता हूँ ट्रांजेक्शन T2 को, देन उसके अकाउंट में 5,000 हो जाएंगे, वो यहाँ जीरो। तो सेम क्या होगा कि सम ऑफ मनी सेम ही है 5,000। दिस शुड बी अ कंसिस्टेंसी। योर डेटाबेस शुड बी कंसिस्टेंट होना चाहिए कि कोई भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई पहले स्टार्ट होने से पहले जो सम ऑफ मनी है वो भी सेम होना चाहिए एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड सम ऑफ मनी शुड बी सेम। दिस इज द कंसिस्टेंसी। एग्जांपल देख लेते हैं। अ ट्रांजेक्शन कैन नॉट वायलेट डेटाबेस कंस्ट्रेंट। ये बेसिकली डेटाबेस कंस्ट्रेंट का यूज करके इंप्लीमेंट किया जाता है। तो या ट्रांजेक्शन कैन नॉट वायलेट, जो ट्रांजेक्शन है कैन नॉट वायलेट द कंस्ट्रेंट वाला जो पार्ट होता है ना वो वायलेट नहीं कर सकता, सच एज यूनिक की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप। ओके। दिस इज ऑलरेडी आई हैव कवर्ड इन माय वीडियोस, सो आप जाके देख सकते हो। एंड आइसोलेशन, थर्ड वन इज आइसोलेशन। सो आइसोलेशन की डेफिनेशन क्या है? आइसोलेशन इंश्योर करता है ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूट इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर। दैट मीन्स कि जब भी आप मान के चलो जब आप पेमेंट करते हो एंड कोई और भी पेमेंट करता है तो वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो दिस इज मीन्स कि आइसोलेट होना चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या है? प्रिवेंटिंग कनकरेंट ट्रांजेक्शन।
जो करंट ट्रांजेक्शन है वो इंटरफेयर विथ ईच अदर, मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकती, और करेगी तो इफेक्ट डालेगी, तो नहीं करना चाहिए। तो व्हेन मल्टीपल ट्रांजेक्शन आर रनिंग कंकरेंटली द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ वन ट्रांजेक्शन इज नॉट विजिबल टू अनदर ट्रांजेक्शन। लाइक दो ट्रांजेक्शन अगर चल रही है T1 एंड T2, तो T1 को पता ही नहीं होगा कि T2 भी है, तो वो एक दूसरे को इफेक्ट भी नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से डेटाबेस इंप्लीमेंट किया जाता है कि वो एक दूसरे को इफेक्ट न डाले। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोलेशन। द लास्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स, ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करता है कि इंश्योर्स दैट अ ट्रांजेक्शन हैज बी कमिटेड। लाइक अगर अपन ने कोई ट्रांजेक्शन किया है, देन इट शुड बी इफेक्टेड इन डेटाबेस में, परमानेंटली सेव हो जाए कि हाँ भाई ट्रांजेक्शन हुआ है, इतने पैसे का हुआ है, ये सब। तो ये डेटाबेस में कमिटेड होना चाहिए, मतलब सेव होना चाहिए, परमानेंट, इट्स रिमेन्स परमानेंट इवन आफ्टर द सिस्टम। अगर आपका फेल भी हो गया पैसे ट्रांसफर करने के बाद, या मोबाइल बंद हो गया है या सब कुछ, बट डेटाबेस में ये रिकॉर्ड जाएगा ही जाएगा। ओके, तो वंस एग्जांपल देख लेते हैं। वंस अ बैंक ट्रांसफर इज कंप्लीटेड द चेंजेस टू द अकाउंट बैलेंस आर परमानेंटली। मतलब अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो और आपको उस समय करने के बाद तुरंत मोबाइल अगर बंद भी हो जाता है, तो ये पूरे रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होनी चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपके पैसे वापस आएंगे, ये सब होता है। तो दिस इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी के पूरे हिस्ट्री आपकी डेटाबेस में सेव होना चाहिए, इवन इफ द सिस्टम क्रैश इमीडिएटली आफ्टरवर्ड। मतलब अगर क्रैश भी हो जाता है तो वो डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाएगा कि आपने ये ट्रांजेक्शन इस डेट को किया था। ओके, तो समरी देख लेते हैं, ओवरव्यू। कि एटॉमिसिटी, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपको इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू का एसेट प्रॉपर्टी पूछा ही जाता है हमेशा। तो दिस इज हम शॉर्टकट है कि आप ऐसे याद कर सकते हो। सो ऑल ऑपरेशन विथ अ ट्रांजेक्शन आर कंप्लीट और नन ऑफ, मतलब ऑटोमेसिटी का सिंपल मीन्स होता है कि या तो पूरे ऑपरेशन हो या फिर कुछ भी मत हो, कुछ भी नहीं होगा। आप इवन आफ्टर की 90% कंप्लीट, 99% भी हो जाएगा लेकिन 1% रह जाएगा तो वो दोबारा सही होगा। ओके, सेकंड इज कंसिस्टेंसी, ट्रांजेक्शन मेंटेन डेटाबेस इंटीग्रिटी एंड ऑल द रूल्स आर एंड कंसेंट। मतलब इसका रूल्स का जो फॉलो होना चाहिए, इस कंस्टेंट लाइक फॉरेन की और प्राइमरी की, इन सब का। एंड मेन इसका वही है कि before transaction start and after transaction completed the sum of money will be the same. Okay, third one is isolation, तो transaction is do not interfere with each other। मतलब अगर दो ट्रांजेक्शन चल रही है तो वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डालेगी ना, उसके ट्रांजेक्शन में इंटरफेयर करेगी, है ना। एंड लास्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी, ये बताया कि कमिट ट्रांजेक्शनल आर परमानेंटली रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। सो ड्यूरेबिलिटी का मीन्स होता है कि पूरे जो ट्रांजेक्शन है आपके डेटाबेस में सेव होने चाहिए, इवन आफ्टर आपका सिस्टम क्रैश भी हो जाता है उसके बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेट प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल इजी है, एक बार आप रिवाइज करें, एंड इंटरव्यू में डेफिनेटली ये पूछा ही जाता है हमेशा। एंड ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एसेट प्रॉपर्टीज। तो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट या सब के साथ कुछ प्रोजेक्ट बनाते हो, तो वहाँ पे इंटरनली ये चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं, एसेट प्रॉपर्टीज। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एसेट प्रॉपर्टी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द वीडियो and press the bell icon for more videos. Okay, thank you.